Teams won the toss. Titans. What will be your decision? First. Any specific reason to field first? டீம் மட்டும் செலக்ட் பண்ண எல்லாம் முடிஞ்சு உனக்கு வந்துருங்க. உனக்கு அந்த இது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் உனக்கு வருமா? ஸ்டார்ட் பண்ணி எரர் இருக்கு. நான் வந்துட்டேங்க. எரருங்க. ஓபி ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளே நான் பண்ணிட்டு Finals and go. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Finals and go. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4, 7, 6, 5, 4. Bowler select பண்ணனும். Finals and go. One bowler select பண்ணனும். அடுத்து அந்த வேற Q okay. Power on. 5, power on. 8, 4, 5, 3, 4. அம்பையருக்கு வாங்கிட்டே இருக்குதா? உங்க 3 வாங்கிட்டே இருக்குமோ? மொத்தம் 4 வாங்கிட்டே இருக்குது. அம்பையருக்கு வாங்கிட்டே இருக்குதா? So, good evening everyone. Welcome to PCL 2023, the first match. Titans versus. So, good evening everyone. Welcome to PCL 2023, the first match. Titans versus. So, good evening everyone. Welcome to PCL 2023, the first match. Titans versus. So, good evening everyone. Welcome to PCL 2023, the first match. Good evening everyone.
देखा जाए वॉरियर्स की टीम में चार्लिश मधु साकेला राजू सैरक्षक सुषमा स्वामी नितेश और देखा जाए मनोज और इसकी मतलब चार्लिश टाइटल्स में सराय अविनाश सहायक सरदार ज्ञाना देखा जाए मनोज और किशोर और आपको मान सकते हैं सराय अविनाश बैटिंग करने आए हैं आप लोग के योद्धा और किशोर साझेदारी और आपको मान सकते हैं सराय बैटिंग करने आए हैं आप लोग के योद्धा और किशोर साझेदारी और आपको ओपनर और बैटिंग करने आए हैं आप लोग के योद्धा विकेट लिया है ओपनर टाइटंस का बॉलर है विकेट लिया है दूसरे बॉल में विकेट लिया है सुमेश वापस पिच में लंबे दूसरे बॉल में विकेट लिया है सुमेश वापस पिच में लंबे दूसरे बॉल में विकेट लिया है सुमेश वापस पिच में फासला डक दूसरे बॉल में विकेट लिया है सुमेश वापस पिच में फासला डक दूसरे बॉल में तो मुत्तू ने सुमेश का विकेट चटकाया और टाइटंस टाइम मुत्तू ने एट द टॉप सुमेश का विकेट चटकाया और टाइटंस थोड़े से निराश मुत्तू ने एट द टॉप सुमेश का विकेट चटकाया और टाइटंस थोड़े से निराश बैट्समैन अभी जो है ये पिच में सईद अशरफ के साथ वो है मिस्टर गोविया फ्रॉम द शॉट टीम थोड़े से निराश विकेट चटकाने के रूप में आ चुके हैं जल्दी से पर एक मिस विकेट चटकाने के रूप में आ चुके हैं जल्दी से पर एक मिस विकेट चटकाने के सैयद अशरफ बच गए आ चुके हैं हर टाइम तो जल्दी से पर एक मिस क्लोज विकेट चटकाने के सैयद अशरफ बच गए वो गवा सकते थे पर लकीली थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्लोज विकेट चटकाने में अशरफ बच गए वो गवा सकते थे पर लकीली थोड़ा सा बॉल मिस्टर मुत्तू का स्कोर अब बच गए वो गवा सकते थे पर एक रन के थोड़ा सा बॉल मिस्टर मुत्तू का स्कोर अब टाइटंस का रेस्टोरेंट वो लोग एक रन के थोड़ा सा बॉल मिस्टर मुत्तू का स्कोर अब टाइटंस का रेस्टोरेंट वो लोग एक रन के ओके तो बॉल एयर में है और दो फील्डर ने मिस कर दिया एक अच्छा सा विकेट का ले सकते थे ओके तो बॉल एयर में है और दो फील्डर ने मिस कर दिया एक अच्छा सा विकेट का ले सकते थे ओवर की समाप्ति और बॉल एयर में है टाइटंस है 3-4-1 चटकाया की समाप्ति बॉल एयर में है टाइटंस है 3-4-1 कोई भी सा बॉल मारेंगे चटकाया की समाप्ति बॉल एयर में है टाइटंस है कोई भी सा बॉल मारेंगे तो वो थोड़ा सा अपना बॉलिंग से विकेट चटकाने के रूप में सकते हैं तो अभी नए बॉलर जो टाइटंस के साथ अभी जुड़े हुए हैं अपना बॉल के साथ खेल रहे हैं वो है करने के रूप में सकते हैं तो अभी नए बॉलर जो टाइटंस के साथ अभी जुड़े हुए हैं अपना बॉल के साथ खेल रहे हैं बहुत अच्छा सा बॉल पहला रूप में फेंका है और थोड़ा सा वॉरियर्स अनस्टेबल अभी दिख रहे हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने एलिमेंट का थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ रहे उनको अनस्टेबल किया है मिस्टर टर्किश के बॉलिंग ने व्हाट अ बॉल सही ढंग से बॉलिंग की है टर्किश ने तो वो अच्छी सी बॉलिंग है और ये अभी एक और बॉल फेंकने की कोशिश एक स्ट्राइक अच्छा सा स्ट्राइक रनिंग बिटवीन द विकेट्स और एक रन उन्होंने ले चुका
तो सॉरी अभी जैसे बॉलिंग चल रही है टाइटंस के टीम से, कोई मौका नहीं दे रहे बैटिंग की टीम को कि वो रन्स बना सके इस 2 ओवर के बीच में। और मेरे से गलती हो गई, तरकेश नहीं सरफराज बॉलिंग कर रहे। 3 बॉल। ओ ओ आउट। एंड ये वॉरियर्स का दूसरा विकेट वो गवा चुके। अभी बैट्समैन वापस पवेलियन में आ रहे हैं। सरफराज कामयाब हुए 1 विकेट अपने टीम के लिए चटकाने में। और अभी वापस जो पवेलियन में आ रहे हैं वो है सैयद अशरफ। तो 2 स्टाफ के मेंबर्स जिन्होंने वॉरियर्स टीम में भाग लिया था, दोनों आउट हो चुके हैं। पहला विकेट मुत्तू के मिसाइल ने लेकर के मारा और सुमेश को अपने मिसाइल से चटका दिया। और दूसरे बॉलर मिस्टर सरफराज ने सैयद अशरफ का विकेट ले लिया और वो रनिंग द विकेट्स के बीच में उन्होंने विकेट हासिल कर लिया। तो अभी जो स्कोर कार्ड दिख रहा है वो थोड़ा गंभीर रूप से सब लोगों के लिए दिख रहा है और वो है 4 रन्स फॉर 2 विकेट्स। तो बहुत अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इस टाइम वॉरियर्स के रिदम में। और अभी पिच में आ चुके हैं मिस्टर श्रीनी राजू, जो होपफुली वॉरियर्स टीम को एक नई दिशा में लेके जा सके। So we can see instability that has come in the Warriors camp. Titans have managed to take good wickets. Sarfaraz bowling and a good defense from Mr. Srini Raju. He needs to put a good score along with Gobi on the scoreboard if he needs to put a good total against the team. तो अभी सरफराज बॉलिंग करे। सरफराज मिसाइल की तरह मिस्टर श्रीनी राजू उनके निशाने में है। और इस बॉल से के द्वारा सरफराज की ओवर की समाप्ति। Oh, a very good bowling attack from the. They have shaken the ground underneath the Warriors camp. Warriors need a good total if they have to have some competition and stay in the game. It's just the start of PCL 2023, but anything can happen in a T20 game. And we hope some sort of hope can be bought from the batsmen who are playing now in the ground. And Gobi facing Muttu is bowling his second over. And the first ball has come wide. You can see some sort of relaxation, but Warriors cannot stay relaxed for a short time. And a good attack from Muttu. Ball. Gobi hits a 4, the first boundary of the game. What a boundary, what a strike from Gobi. He timed his batting strike perfectly. And as he did, he scored a perfect boundary for the first time for a Warriors camp. Some sort of hope. Ooh. There's some sort of excitement. We thought the bails have come off, but unfortunately, that's not the case. Warriors have been given a ray of hope in this point of time, and Gobi keeps his wicket. Ooh, that was a very, very mistimed catch, but a good opportunity for the Warriors team. You can see the Warriors have created good rhythm
in both their bowling and fielding, and you can see the excitement and the josh, the fervor that we can see is too high. Warriors need to break their chains and come out of this trap that the Titans have set for them. So now Mr. Sriniraju facing Muthu. A good partnership is needed from both the batsmen from the Warriors camp. And a good strike. Ball racing towards the boundary, and it's a 4. Very good batting for Mr. Srini Raju, trying to take his team to a good total, and that boundary proves it that Warriors are still in the game. Muthu now, what plans he has? Ooh, very nice strike. Fielder running to chase the ball, stops it near the boundary. And wow, what good running between the wickets from both the players. That was fast running. That didn't look like we are seeing first timers. We see some trained batsmen on the field who, along with their body and technique, are trying to stay in the game. तो 2 रन लेने में कामयाब और इससे स्कोर बढ़ता है 16 रन्स फॉर 2 विकेट्स. पहला विकेट सुमेश जी का और दूसरा सैयद अशरफ वॉरियर्स के टीम से. पर थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं वॉरियर्स कि वो थोड़ा आगे आ सके. 2 बाउंड्री इस ओवर मुत्तू के ओवर में उन्होंने मारा. Basically, there is some sort of hope from the 2 batsmen that we see on the crease right now. And now it's Lal Bahadur from the first over, and a good ball that he had thrown. So you can see excitement still. There's the josh of the Titans team. Titans 2 विकेट से बहुत जोश में है. Important विकेट चटकाई है वॉरियर्स की. And a good run between the wickets. बस 1 रन ले सके लाल बहादुर के बॉलिंग में. और अभी मिस्टर श्रीनी राजू फेस करेंगे लाल बहादुर की बॉलिंग. सिर्फ डॉट और 1 रन इन 2 बॉलों में. तो देखना पड़ेगा कि क्या वॉरियर्स इन ट्रैप से बचने के लिए क्या करेंगी. वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम लाल बहादुर. तो लाल जी कोशिश कर रहे कि वॉरियर्स को थोड़ा लाल दिखाएं. डेंजर जोन में लाने की कोशिश में. थोड़ा डिफेंस की कोशिश पर बॉल सीधा स्ट्रेट टू द विकेट कीपर. तो लाल बाबू की बॉलिंग अच्छी सी कोशिश कर रहे हैं. एंड और रन की कोशिश गोभी ने स्टार्ट किया पर नाकामयाबी इस फॉर्म में. वाइड का इशारा. 1 रन इस बॉलिंग के द्वारा प्राप्त की वॉरियर्स ने और 1 रन उन्होंने टोटल अपने स्कोर बोर्ड में डाला. तो अभी देखा जाए 18 फॉर 2 का रन रेट चल रहा है वॉरियर्स का. गुड डिफेंस पर थोड़ा अटैकिंग पोजीशन में आना पड़ेगा क्योंकि ये पहला पावर प्ले है. तो पहला पावर प्ले में अगर थोड़ा सा अटैकिंग वॉरियर्स करे तो एक अच्छा सा टोटल लेके आ सकते हैं जो भी बाकी के बैट्समैन जो ज्वाइन करेंगे इन टीम को, इस टीम को. सो नाइस स्ट्राइक. फील्डर कामयाब वो बॉल रोकने में और बॉल वापस. एक रन सिर्फ वॉरियर टीम को मिलेगा.
तो 19 for 2 ये बॉलिंग को देख करके लाल बाबू अच्छे से बॉलिंग की, थोड़े वॉरियर्स की रन रेट को कम करने में कामयाब। 19 for 2 रन, 4 ओवर्स समाप्त। इसमें से 2 मुत्तू का, 1 सरफराज और 1 लाल बाबू। 4 अगर देखा जाए, 4 19/4 4.7 का रन रेट चल रहा होगा। अगर मैं अपने अंदाजे से लगा तो 4.75 करेक्ट। 4.75 का रन रेट है तो थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा अटैकिंग पावर लेके आना पड़ेगा, जोश लेके आना पड़ेगा। वॉरियर्स पूरे जोश में, एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है वैसा दिख रहा है। तो वॉरियर्स को भी अपना पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी को बढ़ा करके एक नया मोड दिशा में जाना पड़ेगा। एंड डिफेंसिव शॉट, एक रन लेने की कोशिश पर नाकामयाबी इस मोड पे। सो दे वर ट्राइंग टू गेट 1 run बट Mo Sahib's first bowling not allowing to do so. So it's still in the danger zone. That's what people say when the runs are not on the board and 2 wickets are gone from your team. Ooh, a good opportunity for a catch, but no fielder present at the position where the ball has gone, and 1 run taken. So we can see some excitement from the camp. People are chanting Gyana, Gyana, Gyana. So of course, Gyana responds. It's only just 1 run. Scoreboard runs to 20 for 2. Mo Sahib. Ooh, is it an out appeal? Does the umpire say anything? No, umpire does not look interested. And some sort of lack of excitement from Titans, but they won't care that much because they have restricted Warriors to a good score. And very nice fielding from the Titans team. You can see that they are all around the field trying to stop even singles and boundaries. After the 2 boundaries, there's been a shortage of runs, but the tap has to be opened somehow from these 2 batsmen. Ooh, no, these shots cannot lead to more runs. They have to do something to change their style. But I think since there are overs left, some sort of ray of hope can be seen. And a strike. Trying to stop the ball. Oh, and try to, but it's a 4. It's a boundary. It's a good boundary. Fielder tried to stop the ball with his football skills, but unable to do so, and the ball touches the boundary. Mr. Vishnu from Titans tried to stop, but unfortunately, the ball's speed was faster than the individual speed, beating it and leading it for a boundary. So, getting some excitement. So, it's a new bowler now, end of the over. Score is 24 for 2. Run rate is a bit low, but these boundaries or sixes can do something for the match. And a wide first ball from Mr. Avinash, playing for Titans team this time. 24 for 2, 25 for 2 now. Run rate has now gone to 5. First ball again to be replayed, and a good shot. Good shot from Mr. Srini Raju. Single taken. Good running between the wickets. तेज रफ्तार से मिस्टर श्रीनी राजू दौड़े और 1 रन उन्होंने अपने खाते पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर श्रीनी राजू 8 for 11, मिस्टर गोपीनाथ 11 for 12 एंड अच्छा सा स्ट्राइक
नहीं बना सके, साझेदारी थोड़ा सा बना के रखने का है। अगर कोई भी सा विकेट चटकाए तो टाइटंस को वो अपना फायदा दे सकते हैं, तो वो फायदा रखना पड़ेगा। एंड गुड बॉलिंग फ्रॉम टाइटंस। तो चीयर करने के लिए चीयरिंग स्क्वाड यहाँ पर अविनाश सर के लिए देखना पड़ेगा कि क्या रूप वो अपने बॉलिंग से लेके आ सकते हैं वॉरियर्स के अगेंस्ट। ओ विकेट! एंड देखा, जैसे मैंने आपको बताया, अविनाश जी ने विकेट लेने में कामयाब। और तो यहाँ पर चीयरिंग स्क्वाड हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, पर आई थिंक वो मिस्टर कल्याण जी के लिए या फिर जो आउट हुए उनके लिए, तो वो हम बता नहीं सकते इस टाइम पर गोपीनाथ वापस इस टाइम पर जा रहे हैं। श्रीनी राजू जी के साथ अभी नया बैट्समैन जुड़ेंगे, तो देखना पड़ेगा क्या मोड पे वॉरियर्स जाएगी। गोपीनाथ 11 for 15। अविनाश जी ने उनको बॉल किया था, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम 73.33। तो नए बैट्समैन जो अभी ज्वाइन करेंगे वो है मिस्टर मितेश कुमार। तो यस, मिस्टर मितेश कुमार 3 विकेट चटकाने पर अभी मिस्टर श्रीनी राजू के साथ साझेदारी बढ़ाने की कोशिश। अभी वॉरियर्स बहुत थोड़े अनस्टेबल, यानी कि लगभग अपने पैरों पे सही से खड़े नहीं है, क्योंकि रन्स का जो टैप खोलना चाहिए था वो अभी तक खुला नहीं। और इसमें हर बॉलर ने कुछ ना कुछ अपने अंदाज से विकेट चटकाए, वॉरियर्स को उनको हिला दिया, जिसकी वजह से वो वॉरियर्स हिल करके रन्स नहीं बना रहे। और अविनाश जी ने अभी नए से उनको हिलाया। एंड ये एक डिफेंसिव शॉट, क्योंकि नए बैट्समैन है और अविनाश जी बहुत कॉन्फिडेंस अपने बॉलिंग पर खेल करके कोशिश। अविनाश जी ने अपने ओवर समाप्त कर करके एक विकेट चटका करके स्कोर बोर्ड किया है 26 for 3 फॉर वॉरियर्स। रन रेट चल रहा है 4.33 के गति पर ये रन रेट की गति को बढ़ाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग साझेदारी बना के रखने का है। सो मिस्टर मोहसेब वापस ज्वाइन करेंगे अपना ओवर बनाने के लिए। स्कोर बोर्ड देख सकते हैं, मिस्टर सुमेश जी डक 0 for 2 बाय मुत्तू। सैयद अशरफ जी आउट हुए 2 रन्स 5 बॉल्स खेल करके बाय ज्ञाना और किशोर कुमार, जो आई थिंक विकेट कीपिंग कर रहे हैं। गोपीनाथ सुब्रमण्यम 11 for 15 बोल्ड बाय मिस्टर अविनाश पांडे। और अभी मिस्टर श्रीनी राजू और मिस्टर मितेश अभी क्रीज पे। बहुत हिला करके रखा है टाइटंस के बॉलिंग ने वॉरियर्स को। वॉरियर्स थोड़े कामयाब नहीं हो रहे, 3 विकेट इंपॉर्टेंट चटका दिए गोभी, सुमेश और अशरफ का, जिस वजह से थोड़ा सा कमती रन्स की पड़ रही है वॉरियर्स को इस समय पर। एंड मिस्टर श्रीनी राजू कोशिश में कि वो अपने वॉरियर्स के लिए कुछ न कुछ रन्स बनाए, एक नया दिशा में लेके जाए, ताकि एक अच्छा सा स्कोर बन सके। नाइस स्ट्राइक से उन्होंने बैट से अपना बल्ला घुमाया, पर एक ही रन उनको मिल चुका, क्योंकि जो भी फील्डर है वहां पर वो इतने तेज गति से बॉल को रोका कि सरफराज जी ने, जो फील्डर थे, तो सिर्फ एक ही रन उनको समाप्त आखिरी पर। ओ बॉलिंग अच्छी से कर रहे हैं मिस्टर मो साहेब, एक ही रन 4 बॉल में सिर्फ दिया है, जिसकी वजह से अभी है स्कोर 27 for 3। 5वां बॉल एंड ओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है! एक और विकेट चटकाया वॉरियर्स का, और टाइटंस का एक्साइटमेंट, इनका जोश देखने का लायक है। तो नेक्स्ट
विकेट कैच जो हुआ है और वापस पवेलियन में जा रहे बैट्समैन. इस टाइम मितेश जाएगा रेडी, ऑलरेडी जाएगा क्रीज से ही. तो मिस्टर मितेश कुमार 0 for 4. एक डक जैसा कह सकते हैं, 4 बॉल्स फेस कर करके. तो फुली टर्म्स सही से नहीं आ रहे, पर जैसे मैंने बताया टाइटंस ने मुझे भी हिला दिया है अपनी बॉलिंग से. दूसरे टीम को दिखा रहे कि क्या बॉलिंग लाइक है और क्यों उनसे डरना चाहिए जब वो बॉलिंग करते हैं. और वॉरियर्स आप देख सकते हैं कि डर के रूप में है, पर ये कभी भी चेंज हो सकता है. सो गेम इज नॉट ओवर. 6 more wickets are still left. The match as it goes is 27 for 4. And it's a wide. So Mo Sahib has to play one more, but he will be excited that he has taken a wicket of Mr. Mitesh at the moment, trying to shake the foundations of the Warriors team who are batting right now. So with this ball, he has shook the Warriors team, and that with his over, the score goes to 28 for 4. 7 overs over, and as you know, 28 by 7 is 4, so the run rate will be 4. Mr. Mohammad Wasim 0 for 1 is the next. Is the score after facing one ball, which was a dot, and Mr. Srini Raju 10 for 15. 2 by 3. So 66.67 is the run rate of Mr. Srini Raju. Mosaib is still with the run rate of 0. Strike rate, whatever, I mean, which is the correct term for it. So now, shaking the foundations, Avinash has come back and he's going to shake it further. Or will there be some hope from the Warriors team that can be seen right now? Let's wait and watch because Avinash is here to set his trap. And with this trap, the ball is in the air, but not capable. So a very good shot. So now it's a 4 after a very long time. Long time we had been waiting from the Warriors team for some boundary, for some excitement. And yes, with this 4, the score jumps to 32 for 4. So Avinash has to rethink he's doing. But the Warriors have also started planning out what phase they have to do. So I think they are now going to go after Avinash after that boundary because runs are needed for this match. They need to put a good total. Ooh. So trying to outplay the batsman at the moment. We can see confidence building up. Warriors need to get some inspiration. Someone has to come out. Someone has to shine. And that's a good shot from Mr. Sriniraju. But Sarfaraz toppled the ball. And I think they can go for a 2. And yeah, no, I think it's safe. Good save. Very good running. There was a hint where they thought they couldn't score 2, but they had reached well within the crease. 2 runs taken. Ooh. Very good fielding from Mr. Avinash, trying to stop all those singles after taking that boundary and 2 into his scorecard. So 5 balls have been already played. He does not want to give them any more runs. 7 runs already handed over. And with that, he finishes his over tidy, as it can be said, just a boundary, 1, 2, and a single. So 7 runs in Mr. Avinash's account, but he would be happy nonetheless because he has still restricted the batting power of Warriors who are
still not up to the level at the moment. So we can see now Muthu Kumar had played 2 overs, 15 runs, 1 wicket with a economy of 7.5. Sarfaraz 1 over, only 1 run with a economy of 1. Lal Babu 3 overs with the economy, 1 over, 3 is the runs given by him. Mosaib Ansari 2 overs, 7 runs. Avinash Pandey 2 overs, 9 runs, and both Mosaib and Avinash had taken 1 wicket each. So there's some discussion going on between the field. Oh, just a small water break needed by Mr. Srini Raju. I think that water, does it have the magical capabilities? We don't know, but we can see now, since he will be the one who is facing the new bowler, Mosahib Ansari. 7 runs, 1 wicket, 2 overs faced. Very good bowling from him, trying to restrict Warriors as much as possible so that making it easy for the Titans team so that a good score can be created for them to chase very easy. And a strike from Mr. Sriniraju. I think that water was what he needed and the water helped them to get 4 runs. So इसके साथ 4 runs मिले Mr. Sriniraju को तो 39 for 4 इस बाउंड्री के बाद. तो अभी मिस्टर श्रीनिराजू के स्ट्राइक रेट 100, 19 पे 19. आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस गेम का. एंड विद दैट सिंगल लेने की कोशिश, नहीं, गुड रनिंग विकेट, विकेट्स मिस्टर श्रीनिराजू ने अच्छा अंदाजा से लगा करके जल्दी से एक रन ली, जिसकी वजह से अभी रन का गाता जो बना हुआ है वो है 40 for 4. So good thinking from him at that point of sight. He scored 40 runs, the loss of 4 wickets. Oh, does he catch it? And yes, he's confident, and that wicket is lost. And we can see some loss of forever from the Warrior side as they lose their 5th wicket. Catch taken from Mr. Avinash, who's becoming an all-rounder, both bowling as well as fielding. So we can see that he is becoming a big asset for his team. Titans are with full Josh and Hosh in this point of time. So now the scorecard reads 40 for 5. Mohammad Wasim walks back to the pavilion, 33.33 with strike rate 2 out of 6. Avinash catches the ball. Mosahib balls that ball. So caught Avinash, bowled by Mosahib. So Warriors still under a lot of pressure now. 5 wickets gone, 40 runs. Not looking good. But hopefully this batsman can change that. So now has the time come for Sundar to arrive at the pitch, change the favors of his team, and with his batting style, try to take his team to a new total that can challenge Titans. And he leaves the ball. First time facing Mosahib in this match. Sundar tries to leave it and trying to shake Mosahib. And a ooh, that was a good opportunity missed. Good attempt, but unsuccessful. And some sort of relief from Sundar because that catch would be devastating if it was caught correctly. So we can see the score has reached 40 for 5. Sumesh 0 for 2. Syed Ashraf 2 for 5. Gopinath 11 for 15. And now we are going back. New bowler
And it's Avinash who had taken 1 wicket and even a catch on his account. So good all-rounder. Run rate is 4.4. And a good strike from Mr. Sriniraju. 1 run. Only 1 run taken. Good fielding from Titans. Hopefully the new batsman, Mr. Sundar, with his batting prowess, can try to change favors to his team. Facing Sundar, Avinash. Ooh, just a good strike, but only capable of taking 1 run at the moment. Ball reaches back to Avinash. And Avinash with full confidence tries to ball the third ball of the over, just giving 2 runs, 11 runs for one. And a defensive shot. Textbook defense, as Dravid says it. Textbook defensive shot from Mr. Sriniraju. And Avinash is fourth. Good strike. And there's a rotation now. Sundar reaches the pitch easily. It's going to be an overthrow attempt, but no overthrows. Only 1 run. So 3 runs and a dot. And this over of Avinash. Avinash should be happy with whatever he has been given. 2.4 overs played, 12 runs and a wicket. And he would be very happy with that because we know Sundar is a blaster of a batsman. Coming at this point of time, you would have come with the intention to strike the ball with maximum attack, but being unsuccessful at the moment, all because of Avinash who's bowling. And yes, what a bowling. Good over from Avinash, good over from Titans overall. And with this, he ends the over. Just 3 runs at the moment, 43 for 5, 4.3. So 10 overs completed. 43 is this runs, 4.3. So 5 wickets down. Somesh Malat, Syed Ashraf, Gopinath, Mitesh and Mohammad Wasim all almost in single digits other than Gopinath who scored 11. And we can see 2 zeros from Mr. Somesh and Mr. Mitesh. But now Sundar with 1 run of 5. Mr. Sriniraju who is still at the crease for 22 runs in 23 balls, not out. So what mode? We can see the whole summary on that point scoreboard. Here we can see Muthu Kumar 2 overs 15 runs 1 wicket with the economy of 7.5. Sarfraz 1 over 1 run with economy of 1 was very economical. And Lal Babu 3 runs only of the economy of 3. He's also very economical. Mosa have 3 overs 12 runs 2 wickets. That's why the team is counting on him with the economy of 4. And Avinash 3 overs 12 runs 1 wicket with economy of 4, same as Mo Sahib, but 1 wicket less. So you can see 4 wickets are down through the bowler and 1 run out, which was Mr. Syed Ashraf. You can see Mr. Sriniraj is still at the crease since he batted after early wickets being taken. There's a drinks break. So match summary once again, 43 by for 5, 5 extras. 4.3 is the run rate, 10 overs played already. Mr. Raju is top of the scoreboard from the Warriors, 22 for 23, who is not out. Gopinath Subramaniam 11 for 15, who has already been out, and Ashraf 2 for 5.
who has already been out, and Mosaib Ansari 12 for 2 in 3 overs. Avinash 12 for 1 in 3 overs, and the last bowler Muthu Kumar 15 runs, 1 wicket in 2 overs. So we can see the prowess of Titans bowling. They've shaken the roots of the Warriors टीम. देखा जाए उनका इंटेंशन था विकेट्स ही लेना अर्ली गेम में 10 ओवर तो पहला हिस्सा है इस मैच का और 5 विकेट चिटका करके 43 रन उनको रिस्ट्रिक्ट किया है वॉरियर्स टीम को तो वॉरियर्स टीम को कुछ ना कुछ नया अटैकिंग पोजीशन नया कुछ इस दौर में लेके आने का है जिससे कि वो थोड़ा ट्रिपल डिजिट्स के ऊपर अपना स्कोर कार्ड लेके जा सके थोड़ा टफ कंपटीशन दे टाइटंस को अगर उनको इस गेम में रहने का है फाइनल्स तक पहुंचने का है पर ये सिर्फ पहला मैच है कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी इवन टाइटंस का बैटिंग बाकी है वॉरियर्स का बॉलिंग बाकी है तो कोई भी सा पॉइंट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट और टर्न्स तो होते रहते हैं कोई भी सा रोड आप ले लो पर ये रोड अभी वॉरियर्स के हाथ में है क्योंकि अभी वो बैटिंग कर रहे हैं श्रीनराजू सर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से क्रीज में है उनके साथ सुंदर जो साझेदारी इस टाइम कर रहे हैं एंड मोसाब अंसारी अपना आखिरी ओवर खेलते हुए एक ही रन फर्स्ट बॉल में दे चुके टाइटंस अपना कॉन्फिडेंस और अपना उन्होंने अकाउंट मोसाब को हैंड ओवर किया है इतना कॉन्फिडेंस कि 2 विकेट चटका करके बॉलिंग उनको सौंपा हुआ है and that is the right decision from the captain of the Titans team giving the ball to Mosaib at this point of time after taking 5 wickets is a very good decision because he knows Mosaib is one of those players who can take wickets early on and ball is in the air no fielder present they take a 1 and running for 2 and very easy running. You can see those fast legs of both the batsmen, especially Mr. Sriniraju and Sundar, who is accompanying him. So both batsmen very fit, trying to take any part of runs that they can and try to increase the scoreboard to a level that is feels like a competition to the Titans team. But Mosaheb, who is known for taking the wickets, who has taken 2 already, trying to take a third, is on the hunt. Ooh, and this hunt produces a dot ball after giving 3 runs in this particular over. He's becoming a predator for trying to take wickets. The praise are the Warriors at the moment. And edge of the batsman, the fielder trying to use his football skills. Luckily, ooh, there's a slide. Slide, I think the pitch might be such a way that made the wicket keeper slide. But luckily for him, only just 1 run taken. Not one. So 47 for 5. Mosaheb is on the hunt. Hunt is producing good results for the Titans team. They've tested their bowler and the bowler is producing results which we can see in the scoreboard and from his bowling prowess. So Mr. Mosaheb ends his over. Score is 47 for 5, 11 overs being played. Avinash is the next bowler who will also finish his 4 overs. At the moment, he has a count of 12 runs with 1 wicket and a catch.
very important catch that he had taken early on. And we hope Warriors have put his confidence on the Mr. Avinash that can take the Titans team to a new level. And the ball is in the air, no fielder present. Sarfaraz catches the ball, returns it to the wicketkeeper, and only a single taken. Ball looked it was in the air for a long period of time, but Sarfaraz reaches the ball, tries to hamper it from reaching the boundary, gives it back to the wicketkeeper, and only a single from. So one more run into the account, but singles can only lead you to a score which you might not be happy with. Boundaries and sixes are needed at the moment, which can take the team to a new level if they want to stay in the competition. The hunt is on, and Avinash is on the hunt, but he slips with the wide. But he won't be too much happy about it because he knows what is the current score of Titans, and he's shaking the batting ground of Warriors at the moment. So Titans full on the game. They know that Warriors are already restricted to a double digit score, and with this, Warrior reaches 50 team effort. But you can see the other team also has put a lot of effort to try to reduce them to such 50 for 5. Avinash once again balls it. Ball was in the air but not too high. Fielder finds it easy and returns it back to the wicketkeeper. So 51 for 5, and ball was in the air but reaches the hands of the fielder trying to take a single. Unfortunately, they couldn't. And with this, the over ends for Avinash as well as bowling, but he won't be unhappy about it. 51 for 5 is the current score. Avinash finishes his bowling with 16 runs, 1 wicket taken. Warriors are still under the 5 run rate. Run rate as of now is 4.25. And the first wide, Muttu is back on the attack. 15 for 1 was his account as a bowler. He is now throwing the ball to the very new-ish batsman, but was faced many balls. And Swinder strikes the ball. The ball races towards the boundary, and it's a 4. Much needed 4. Very good batting rotation. And as a result, Sundar has produced the result after staying too long in the crease, adjusting to the bowlers, and that's his boundary in this over. 56 for 5 is the current score. Muthu trying to restrict, and with the next ball, it's a wide. So the hunt is still on for the wickets for Mr. Muthu. Sundar trying to strike the ball as much as he can, and with that, he tries to take a single.
easy run. No, but Sundar is not happy with the single. He runs back for a two. With such fast legs, he returns well within the crease before the wicketkeeper could stump him out. And last ball goes for 2 runs. Very good running between the wickets by Sundar and Mr. Srini Raju. But hats off to Sundar for that fast pace running. And not a good shot. Avinash trying to indicate to be ready for Sundar's attacks to his fielders. Ooh, small hits strikes Sundar's legs. Could be an LBW, but since we don't have the third umpiring, he's safe at the moment. 59 for 5 is the current score. But to returning back with this attack, trying to take a single but slips. The fielder trying to stop that ball. And the ball will be slippery at the moment. As more as the match goes on, it will become more slippery. Sundar tried to hit a sweep shot, but unfortunate at that attempt, and that ends the over. 59 for 5. So now Sarfaraz will return back, who has become the most economical bowler for Team Titans. Just 1 run in 1 over. So he's back on the attack. Muttu has just given 23 runs for 1 wicket. Avinash trying to adjust his plays according to his needs so that they can take early wickets. He knows how Sundar and Mr. Sriniraju play, so he knows where the wickets can come. Safraz on the attack, and that with the fast bowling, the ball races towards the boundary from the hands of the batsman, but the batsmen are capable of running as well, and they reach well within the crease. So mishap avoided, but good opportunity capitalized by the Warriors team. So 61 for 5 का स्कोर कार्ड चल रहा है. तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स फ्रीक्वेंट रोटेशन अटैकिंग को चेंज करने का फायदा दिख रहा है. तो अगर अच्छा सा स्कोर बनाने का है, सुंदर और मिस्टर श्रीनिराजू को अपना साझेदारी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो बैट्समैन अब भी अच्छा स्ट्राइक रेट करके स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश. एंड व्हाट अ शॉट, and that's a 6. First 6 of the match. First 6 after a long time. सब लोग यहाँ पर दुआ कर रहे थे 6 का, और हमें 6 मिला. सुंदर ने हम लोग को वो पहला छक्का दिखाया, तो उसके लिए थैंक यू. वो बॉल सरफराज के बॉलिंग से आ चुका. एंड यस, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट few batting from Mr. Sundar. No, it's a single. तो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, सरफराज थोड़ा इकोनॉमिकल बनने के कोशिश. अभी उन्होंने 10 रन्स उन्होंने वॉरियर्स के इस ओवर में दे चुके. अभी वो वापस उस बॉलिंग तेज रफ्तार से डालने की कोशिश में, जिससे कि वो थोड़ा फायदा जो उस सुंदर के 6 से हुआ है वो वापस उनको जोश ना दे और उनको तोड़ दे इस मोमेंट पे. सिंगल लेने की कोशिश, कोई फील्डर सामने मौजूद नहीं था, तो उसका फायदा उठा करके फास्ट रनिंग कर करके 1 रन हासिल की मिस्टर श्रीनिराजू अपने बैटिंग से. तो 70 रन्स अभी अकाउंट पे वॉरियर्स के टीम पर.
तो 70 for 5 का स्कोर चल रहा है, 5 रन रेट। सो 14 ओवर्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से रन रेट 5 का चल रहा है। अच्छा बॉलिंग सरफराज करने की कोशिश, पर सुंदर और मिस्टर सीनियर राजू ने थोड़ा रन्स लास्ट ओवर में लिया और एक सिंगल खोल करके अटैकिंग मोड में मिस्टर श्रीनी राजू अपना साझेदारी सुंदर के साथ बना करके रखे हैं। मिस्टर श्रीनी राजू 28 for 31, सुंदर 19 for 21। ये दोनों बैट्समैन जैसे मैंने बताया एक्सेल कर दो। नाइस बॉलिंग। जैसे थे मुत्तू का बॉलिंग इस टाइम पर है, वो अपना फिर अपना ओवर खत्म करने की कोशिश। 24 रन्स उन्होंने दिया वॉरियर्स के अगेंस्ट, एक विकेट चटकाया। पहला बॉल 1 रन, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल भी डॉट। तो टाइटंस का बॉलिंग थोड़ा टाइट और डिस्ट्रक्टिव लग रहा है, पर बैट्समैन भी अभी डिस्ट्रक्टिव मोड में, डिस्ट्रक्टिव मोड से शॉट मारने की कोशिश, पर वहाँ पर फील्डर मौजूद। फील्डर वापस विकेट कीपर को बॉल्स माफ किया, पर ओवरथ्रो में लेने की कोशिश और 2 रन्स गंवा चुके। 2 रन्स वॉरियर कमा चुके। और थोड़ा सा स्लाइट फील्डिंग को छोड़ करके सरफराज ने 2 रन्स दिए वॉरियर्स को। तो फिर ये मौका वो ना छोड़े, क्योंकि अभी 73 for 5 चल रहे हैं। एंड शॉट सुंदर ने मारा और वो बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री को छोड़ते हुए एक 4 एक बाउंड्री उन्होंने कमा लिया है। तो जैसे मैं बताया, अभी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन अभी भी फील्डर में मौजूद है, मिस्टर श्रीनी राजू उनको सपोर्ट देने की, ताकि वो रोटेट कर सके स्ट्राइक और हमेशा स्ट्राइक सुंदर को दे सके, जो अभी डिस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस मोड पर। और एक स्वीप शॉट कोशिश करने में, पर फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन लेने में कामयाब। तो गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो अच्छा दिमाग लगा करके दोनों मेंबर्स ने कोशिश की कि वो उस आदमी को बैटिंग दिलवा सके जो डिस्ट्रक्टिव है। तो देखा जा सके मिस्टर श्रीनिराजू 29 for 32 नॉट आउट, 26 for 26 मिस्टर सुंदर नॉट आउट। ठीक है, ओके ठीक है। तो वॉरियर 78 for 5 15 ओवर के बाद। और देखा जा सकता है सोमेश, अशरफ, गोपीनाथ, मितेश और मोहम्मद वसीम बैक टू पवेलियन। ऑलमोस्ट सब एक्सेप्ट गोपीनाथ ने एक सिंगल डिजिट का स्कोर वॉरियर्स के लिए कमाया है। तो 15 ओवर्स के बाद 78 for 5 रन रेट है। सुंदर अभी क्रीज में अटैक करेंगे और उनको अटैक देने में लाल बाबू, ओह दैट्स बॉल इन द एयर, ऊपर ऊपर जाते हुए, कोई फील्डर मौजूद नहीं वो कोशिश में, और नॉन स्ट्राइकर के एंड पे बॉल थमाया। 2 रन उन्होंने वॉरियर्स के खाते में डाला। तो 5 के गति में जा रहे हैं। दूसरा ओवर के पहला बॉल देते हुए क्या लाल बाबू
कोशिश करेंगे पर कोशिश करने में नाकामयाब। 4 बाउंड्री की तरफ जाता हुआ सुंदर का बल्ला। तो सुंदर का बल्ला थोड़ा टाइटंस के ऊपर भारी लग रहा है। वो थोड़ा भारी उनको भारीपन जो महसूस हो रहा है उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। लाल बाबू को कुछ शतरंज खेलना पड़ेगा जिसकी वजह से वो सुंदर का विकेट चटका सकते हैं, क्योंकि सुंदर अभी इन फॉर्म दिखाई दे रहे हैं और ये सब टीम के जो भी यहाँ पर मौजूद है वो नोटिस कर रहे हैं। और एक शॉट, क्या वो बॉल जाती है 6, ये हुआ दूसरा 6 और दूसरा 6 सुंदर की बैट से आया। So you can see what destructive power, what strength is Sundar playing right now for the Warriors team. Taking the score to 38 and Warriors are now 90 for 5, 15 for 0.2 overs being played. So Lal Babu facing heat at the moment. The heat is coming from Sundar's bat. Oh, what a strike. Mr. Srini Raju reaches the crease first. Sundar reaches the non-striker's end. Sundar tries to take a 2 because he knows that he needs to take the strike. But a single is only been taken. But Mr. Srini Raju quick for the rotation. So 13 runs given at the point by Lal Babu. And Mr. Sriniraju also tries to join, but the ball is in the air. He tries to rotate and quick running between the wickets, and 2 runs easily taken. This shows that both people are fit, even though Mr. Sriniraju has been there for a long time. With his running, he capable of taking the 2 runs with such ease, and that's what the partnership shows. One, a destructive batsman who is at the non-striker's end, and one, a seasoned veteran who is trying to play. And the seasoned veteran goes for a single, tries to rotate the strike to Sundar, but the over ends and Mr. Sriniraju will be taking the strike once again. He needs to rotate the strike or hit runs so that the team reaches a good total before the match ends. 94 for 5 is the scoreboard. Avinash Ponde 4 over 16 he has given. Mosahib 4 over 16. Both have the economy of 4, but Mosahib has 2 wickets. Avinash has 1. Lal Babu 2 for 19, 9.5. Sarfaraz 2 for 12, 6. And Muthukumar 4 for 31. So Sarfaraz and Lal Babu had small changes made in the game, but not to the favor of Titans. The favor has been table turns and the turntables. But in the match, it has been handed to Warriors team, and the tables turned has been done by Sundar predominantly, and who is supporting him is Mr. Sriniraju on the other end. Both have formed a very good partnership right now, which is very much needed for Warriors to progress much further in the game. They have to stay in the game, so these two batsmen are capable of doing that, and that is what capability has been shown by both. And a big appeal from Avinash from his team, but the appeal goes for a wide, so the ball has to be replayed once again by Sarfaraz. Sarfaraz a bit expensive he was in the first over, just a single he had given, but after 2 overs being played and the third over that he's bowling, the runs has been 13 from him. The first one has been wide, so hopefully he can try to restrict or hamper the movement of team Warriors. Team Warriors looking a bit more confident. And Mr. Sriniraju tries to rotate. And good rotation. Very good rotation. He knows that Sundar, who is now in the attacking mode, is the right choice for him to rotate the strike to. And that was a good play from him. He was already ready to leave the crease after striking that ball. So that was a good point from him. And point taken to Sundar. Quick rotation done. Now facing Sarfaraz.
And good strike of the ball, but reaches the fielder. Mr. Srinraju tries to grab that single, but incapable of doing so because of the fielder at that side. So 96 for 5. Two balls being played. First was the wide, second was a single, and the third was a dot. Ooh. Single taken. வயசுடா இது வந்து வயசு கொடுக்கல நோ பால் ஒரு வயசு தானே ஆச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ராஸ் வயசு ஒன்னு போச்சு Just confirmation whether it was a no ball. ஓகே இந்த பால் தானே இடம் இருக்கும் Return back, the score is 98 for 5. Run rate is 6. Bowling now is Sarfaraz back. Ooh, oh, that was a good ball. Ooh, and non-strikers and they were trying to hit. Each player is trying to take the single run, but incapable of doing so. It was a good ball. There was some confusion between the batsmen, but luckily none of them had lost the wicket because these two batsmen are important right now for the Warriors team. 98 for 5 is the score. 3 balls already faced. And a good strike being taken. Oh, one. Oh, the. Oh, nice running from both the batsmen. There was a slip from Sundar as well as the wicketkeeper trying to take that ball and reach the crease respectively. But both safe. Both the batsmen are safe for the time being. Good running between the wickets. As I mentioned, there's some dew in the field which is resulting in people sliding, especially near the pitch. And that's a good strike from Sundar. The destructive batsman is not letting anybody free. So 100, a century of runs being taken. So 100 from the bats of Sundar. 103 for 5. So this was not expected from Team Titans. They need to change. They need to take some wickets. Wickets was coming out at a fast pace in the first 10 overs, but now it has come at a slower pace. And the slower pace is because of the Sundar, whose ball is still high in the air, fielder down, but nobody there to catch the ball, and that's just a single. So as I mentioned, it's a bit sliding pitch, you can say, but both the batsmen are safe at the moment. 104 for 5. So 104 for 5 in 17 overs. Mr. Sahin Raju 34 for 37. And Mr. Sundar 44 of 34, who is the destructive batsman at the moment. So if you can see, 104. so Mr. Srinraju is striking rate at 91.8 and Sundar is striking at a strike rate of 129. So that's what I said. Both the batsmen are destructive at the moment. 104 for 5. Ooh, is that's a wide first ball? Lal Babu 19 for 0. 2 overs has now become 20 for 0 in his first ball resulting in a wide. There has been some leakage of runs from the Titans team. They need to change their bowling attack so that they can capture a wicket. Ooh,
Good bowling from Lal Babu in response to the first bite that he had bowled at that particular period of time. And we can see some young kids even at the pitch. So they are also spectators as most of our adults here trying to enjoy the match that is being played. Oh, that's a good strike of the ball. Some fielder. Oh, that what I said, catches win matches, but at this point of time, fielder was unable to catch the ball. So both the batsmen safe at the moment. Sundar had very nicely strung the ball, returns for a two. Al Babu has to place some sort of a trap to take both the wickets, but Sundar looking destructive, and that is a six. And that's how we know Sundar is. With that, he reaches his 50 as well. 52 to be exact. 52 of 37. Sundar is striking. 140 is the strike rate right now. He has been a runs galore machine, especially in the boundaries department. And supporting him on the other end is Mr. Srini Raju. So now the chains are free. With that comes a new wide. So now the Warriors team are looking good after the comeback from what Sundar has provided and the partnership support that Mr. Srini Raju has provided. Warriors are on a new level. Oh, that was a very good strike. That's a four. They can see excitement from the Warriors camp. Even after losing 5 wickets, they had hope pinned on Sundar, and Sundar has come forth for Warriors team. He knows what predicament that Warriors were facing after the loss of 5 wickets, and seeing the support that Mr. Srini Raju has provided him, he has been able to hit that boundaries and sixes what his team needs right now, and right now isn't far enough. And again, what a good strike. And yes, the excitement is there and is a four. Mr. Srini Raju knew that it's gonna be a four. Why need to run? He has that trust on his batsman. He knows that the fielder wouldn't reach on time, and that confidence has been inspired by him to Sundar. Both batsmen having faith on each other, which is very important in game of cricket. So 122 for 5 is the current score. And what a shot! Ball is in the air. And that's a beautiful six. What a. Yeah. And it's a no ball. Oh, there's a double dhamaka going on Warriors camp. Each player excited for that six. No ball and a six. Wow, that's like 7 runs already. And one more free hit. So Titans are letting loose the runs at the moment. At first, you could see, as I mentioned, game turns. Wide, it's still a free hit. It's still a free hit with that wide. Avinash not talking to his bowler, Lal Babu. He knows that a lot of runs has been leaked right now. This is not looking good for the Titans, who were looking good in the first phase of the game. But it's a game of cricket. As I mentioned, this road has twists and turns, and this turn has been bought by Sundar, along with the support from Mr. Srini Raju. And he strikes the ball cleanly, but reaches the hands of the fielder, tells him to just take a single. Stavinash trying to tell this team to back up because he knows that even if he lets lose a ball right now, it's very dangerous for his team to go back. So the shackles, जो शा जो रस्सी
जो बांध करके रखा हुआ था वॉरियर्स टीम को वो खुल चुका है। अभी इन फॉर्म मिस्टर श्री राजू के सपोर्ट के साथ ये स्कोर में आ चुके हैं। 131 फॉर 5 और रन रेट 7.28 के मात्रा में चल रहा है बॉलिंग का ये फासला। तो देख सकते हैं कि ये फासला में एक अच्छा सा मोड़ लेके आया है सुंदर ने अपने बल्ले के साथ। 67 रन्स 41 बॉल्स के अंदर और मिस्टर श्री राजू 34 रन्स 37 बॉल्स के अंदर। तो दोनों की साझेदारी अ, इस दिशा में चल रही है कि दोनों लोग अभी इन फॉर्म दिख रहे हैं। एक सपोर्ट दे रहा है और एक बल्ला घुमा रहा है और 6 और चौका मारने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस वॉरियर्स ने अपनी टीम इन दोनों प्लेयर्स ने अपने आप डाला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सुंदर अभी सरफराज को फेस करेंगे। तो लास्ट ओवर बहुत अच्छा सा ओवर गया टीम वॉरियर्स के लिए। तो अपना टोपी दे रहे हैं मिस्टर सरफराज। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आने का है। कोई भी सा विकेट चटकाएंगे तो बहुत बड़ा सा फायदा उनको हासिल होगा। तो थोड़ा बॉडी ब्लो लगा है मिस्टर सुंदर को, पर सुंदर जी को कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि वो चौका चक्का ही चाहिए या फिर थोड़ा सा रोटेशन, ताकि वो थोड़ा बॉलर को कंफ्यूज कर सके नए बैट्समैन को फेस करते हुए। तो सरफराज सुंदर फेस करते हुए और थोड़ा सा मिसफील्ड, एक मिसफील्ड हो गया टाइटंस के कैंप से। पर अनफॉर्चुनेटली ओनली फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही रन वो गवा चुके। तो अभी मिस्टर श्रीनिराज जो अभी अटैकिंग कर रहे हैं सरफराज को, तो देखा जाएगा कि क्या इस मोड़ पे क्या दिखा जाएगा वॉरियर से। और ये दिखा कि हवा में बॉल है, हवा की कोशिश, बॉल जा रहा है और ये चौका, बाउंड्री ड्राइव के लिए बाउंड्री। तो बाउंड्री गया मिस्टर श्री राजू के बल्ले से। और थोड़ा अनइकोनॉमिकल सा ये मात्रा चल रहा है इस स्कोर बोर्ड का, स्पेशली जब टाइटंस बॉलिंग कर रहे। तो जो पहले फ्लैट कर्व जैसा दिख रहा था रन्स में, अभी ऑलमोस्ट लॉगरिथमिक कर्व जैसा ऑलमोस्ट हो गया है। एक गुड कमबैक दिख रहा है सरफराज से अभी के मोड़ पे। को कोशिश करने का कि किसी का भी विकेट झटका है तो एक फायदा अपने टीम के लिए ला सकते हैं। तो ये एक वाइड था लास्ट बॉल। और क्या शॉट मिस्टर श्रीनाजू ने मारा, बस सीधा हाथ फील्डर के हाथों पे। अच्छा साझेदारी निभाया मिस्टर श्री राजू ने। 38 रन्स 38 बॉल्स में उन्होंने खेला अपने वॉरियर्स टीम के लिए। तो तालियां बज रही है जब वो पवेलियन के वापस आ रहे। तो अच्छा मौका अपने टीम के लिए खेला मिस्टर श्रीनिराजू ने। मोटो ने कैच किया, ये इम्पोर्टेंट सा विकेट लिया जब सरफराज ने बॉलिंग किया। तो कॉड मोटो बॉल सरफराज श्रीनिराजू 38 फॉर 39, स्ट्राइक रेट ऑफ 97.44 और इसमें 4 फोर्स उन्होंने बनाए। एक इम्पोर्टेंट विकेट चटकाया, एक सपोर्ट जो मिस्टर सुंदर को मिल रहा था वो गवा चुके। तो अभी तरक मोदू क्रीज पे आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि अभी क्या मोड़ लेके आए हैं सरफराज। और स्ट्राइकिंग करके तरक मोदू ने एक सिंगल लिया, डबल लेने की कोशिश और डबल लेने के लिए कामयाब। तो डबल लेने में कामयाब, जैसे मैंने बताया 139 फॉर 6 का रन रेट चल रहा है। 18.5 है ओवर्स जो खेल चुके हैं वॉरियर्स टीम।
और गुड फील्डिंग तो वो सिर्फ एक सिंगल लेने में कामयाब। इससे समाप्त होता है 19th ओवर, 20वां ओवर खेलेंगे। सुंदर 68 फॉर 43, तरक मोटू 3 फॉर 2। लास्ट ओवर अभी खेला जाएगा। तो 140 फॉर 6 अभी स्कोर बोर्ड का रेट चल रहा है, जो 10 ओवर में ऑलमोस्ट 43 का स्कोर था, अभी 140 के ऊपर का स्कोर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि क्या बैट्समैन अगर अच्छा खेलेंगे और एक साझेदारी बना के रखेंगे तो कोई भी सा मोड़ वो लोग पार कर सकते हैं और एक अच्छा सा स्कोर अपनी टीम के लिए ला सकते हैं, जो इस मामले में मिस्टर श्रीनी राजू और मिस्टर सुंदर ने किया, जिसमें मिस्टर सुंदर एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे। तो एयर में तरक मुदु का बॉल गया और एक ओ स्लिप कर चुके सुंदर, स्लिप कर चुके मिस्टर सुंदर, एक सिंगल रन ही ले पाए। तो 4 रन्स पहला बॉल तरक मुदु के बैट से। तो पहला बाउंड्री मारा तरक मुदु ने और वापस कीपर कैच उन्होंने किया। तो नासिर आखिरी बॉल में एक चौका और एक विकेट उनके खाते में गया हुआ है। तो अभी स्कोर बोर्ड है 144 फॉर 7। अभी सिर्फ 4 बॉल बाकी है नासिर के बॉलिंग से। तो क्या स्कोर वॉरियर्स लेके आ सकते हैं अपने स्कोर बोर्ड पर, वो देखा जाएगा इस आखिरी 4 बॉल पे। तो बॉल को फेस करते हुए सुबोध कुमार, एंड इट्स अ वाइड, सब वाइड की नारे मार रहे हैं और उनको एक वाइड मिल चुका है। तो 5 रन्स और क्या शॉट सुबोध ने मारा, अभी भी एयर में है बॉल, फील्डर लेने की कोशिश पर बाउंड्री से बॉल उन्होंने रोका में कामयाबी पाया। तो गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स और गुड फील्डिंग बाय द फील्डर्स from the Titans team, but 2 runs. And good stoppage from the fielder playing for Titans team. I think just a single being taken. Yes, single taken. Oh, and it's an out. Hmm. And we can see some excitement from Gyana. He knows his teammate in the Warriors camp and being out who was destructive at the moment. So Sundar departs from a beautiful innings that was played by him for the Warriors camp, and we can hear some huge round of applause from the Warriors team for his batting. Even we can see some applause from the Titans team as well, as they are well aware that he also has played a good innings for his team. So that's a good spirit from both the teams that is seen visible. Yeah. And it's out. That is also stumped. The new batsman tried to take the ball. It was Manoj Panjir, but he was unfortunate in taking the ball. So now 148 is the score that has been tallied up by the Warriors team और 149 बनाने का है, जो पहले इतना रन हम लोग देख नहीं पाए थे पहले 10 ओवर में, वो अपने वॉरियर्स के टीम ने बढ़ा करके 149 तक इस मुकाम तक वॉरियर्स को लेके आया हुआ है।
तो अगर स्कोर बोर्ड देखा जा सके, सुमेश थे 0 for 2, सैयद अशरफ थे 2 for 5, गोपीनाथ थे 11 for 15, मिस्टर श्री राजू जो लंबे समय तक क्रीज पे थे 38 for 39, मिस्तेश 0 for 4, मोहम्मद वसीम 2 for 6, सुंदर जो अच्छा बैटिंग कर चुके वॉरियर्स की टीम के लिए 68 for 44, तर्क मुदो 7 for 4, सुबोर 3 for 2 और मनोज पंजर आउट जो स्टंप के किशोर कुमार जो विकेट कीपर थे। तो यहाँ पर सिवाय 3 लोगों के सारे लोगों का स्कोर सिंगल डिजिट पे था। और अगर देखा जाए टाइटंस के बॉलिंग कैंप पे मुत्तु कुमार 4 overs 31 रन 7.75, सरफराज 4 overs 30 रन 7.5, लाल बाबू 3 runs 46 15.3 जो बहुत एक्सपेंसिव कहा जा सकता है उन्हें वो थे। फिर मोसाइब अंसारी 4 for 16 2 विकेट 4 के इकोनॉमी रेट में। फिर अविनाश पांडे 4 overs 16 रन 1 विकेट 4 के इकोनॉमी पे, और नासिर 1 over 8 रन 3 विकेट उनके हाथों पे। तो अभी टाइटंस को 149 बनाने का है, तो होपफुली वो बना सके। अच्छा सा वो लोग ने फर्स्ट हाफ खेला था, तो देखते हैं कि सेकेंड हाफ कैसा जाता है टाइटंस के साइड में। तो थोड़ा सा टीम स्पिरिट अभी भी बाकी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। आते हैं वापस थोड़े समय के बाद।
Scorer copy. Striker with me and non-striker, Kishore. Striker, non-striker, Kishore. Manoj. Time 8:40. Bora ready. Sadik strike, non-strike Kishore, bowler Manoj. Start time 8:40. Bora ready. Okay. Hello. 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 नहीं 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 है. हेलो. इनपुट नहीं जा रहा है ना. ओके. तो वेलकम बैक. थोड़ा सा लेट हो गई, वो माफ़ी चाहता हूँ, पर अभी देखा है सेकेंड फेज का रूप चालू हो गया है. यहाँ पर अभी सादिक अली और किशोर बैटिंग करेंगे टाइटंस के लिए, और वॉरियर्स में पहले बॉलर मिस्टर मनोज पंजर. तो देखा जाए 2 बॉल स्टार्ट हो चुका है खाता वॉरियर्स का, और उसमें से एक बाउंड्री सादिक अली ने बनाया दूसरे बॉल में से. तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा जा चुका है टाइटंस के लिए. टाइटंस को 149 बनाने का है. 145 रन चाहिए. 19.4 ओवर, 7.37 के रन रेट पर अभी रन रेट 12 चल रहा है. तो रन रेट थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में. दैट्स द फर्स्ट विकेट, और सादिक अली अपना विकेट गवा चुके हैं. बाउंड्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस डाल करके उन्होंने सोचा कि स्ट्राइकिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्ट्राइकिंग इम्पोर्टेंट के साथ साथ अपना विकेट भी इम्पोर्टेंट होता है रखना, और वो उसमें कामयाब ना हो पाए, जिसकी वजह से उन्होंने पहला विकेट गवा दिया, और नए बैट्समैन को भी पवेलियन में एंटर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सादिक अली 4 रन 3 बॉल खेलते हुए, स्ट्राइक रेट 133.33. मनोज पंजियर थे बॉलर जिन्होंने पहला विकेट चटकाया वॉरियर्स के लिए. तो यहाँ पर दोनों टीमों ने स्टार्टिंग फेज में ही विकेट चटकाना स्टार्ट किया था, और सेम चीज वॉरियर्स भी कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं अपने बॉलिंग के साथ डाल करके. तो देखना पड़ेगा कितने हिसाब से वो अपना बॉलिंग में ये कंट्रोल से कंट्रोल भी डाल करके टाइटंस अपना अपने बॉलिंग को कॉपी कर सके. पर यहाँ पर अपना बॉलिंग को चेक करवाने का है. तो राम कुमार पी नेक्स्ट बैट्समैन, और डिफेंसिव शॉट खेल करके अपना खाता खोला डॉट बॉल के साथ.
तो ये थोड़ा जोश में वॉरियर्स टीम है। सुमेश इंस्पायर कर रहे हैं, थोड़ा टाइट फील्डिंग कर करके मनोज पर कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अपना टाइट फील्डिंग रखने की कोशिश करो, कोई भी सा रन्स टाइटंस को मत दो, स्पेशली अर्ली गेम में। वही चाहते हैं अपने टीम कैप्टन अपने साथियों से जो उनकी मदद कर रहे हैं। इस टाइम पर 2 डॉट बॉल्स खाते में हैं। ओ, थोड़ा सा नाइस बैटिंग फ्रॉम मिस्टर राम कुमार, रोटेट करने की कोशिश में कामयाब, सफलता पाते हुए 1 रन ऐड किया अपने टीम के खाते में। और ये जाता है स्कोर 5 for 1। तो मनोज पंजियर ने 1 बाउंड्री और 1 विकेट प्लस 1 सिंगल डालते हुए 5 रन टाइटंस टीम को दिया। टाइटंस को थोड़ा सा अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर करके बैटिंग करने का है, किशोर फेस करेंगे नए बॉलर को। और ये पहला बॉल जाता है वाइड के लिए। वॉरियर्स को देखना पड़ेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रास ना दे जो टाइटंस को और फायदा दे सके। सैयद बॉलर है, अशरफ स्टाफ के टीम से जो वॉरियर्स के साथ इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। एंड दैट्स अ विकेट, विकेट चटकाया बॉलर का। राम कुमार पी बैक टू पवेलियन। राम कुमार पी जो रोटेशन में अपना स्ट्राइक नेक्स्ट ओवर में डालने की कोशिश में, पर नाकामयाबी इस अवसर पर और नए बैट्समैन को टाइटंस को बेचना पड़ा। तो ऑलमोस्ट सेम फेस दिख रहा है दोनों टीमों से। वॉरियर्स भी अटैकिंग मोड में आ चुके हैं, सुमेश का टीम भी टाइटन से सीख करके बॉलिंग ऐसा डालने की कोशिश करे जिससे कि वो अर्ली ऑन विकेट चटकाए। और इसमें से 2 विकेट्स ऑलरेडी टाइटंस के चटका चुके हैं। एक है आपके सादिक अली और दूसरे है राम कुमार पी, दोनों जो पवेलियन के वापस जा चुके हैं। सरफराज, न्यू बैट्समैन सरफराज। तो सरफराज अहमद अभी नेक्स्ट बैट्समैन होंगे जो सफलता डालने की कोशिश करेंगे। एंड होप that Sarfaraz can try to score maximum amount of runs. Syed Ashraf is on the hunt. And a defensive shot. We can see some words of inspiration coming from each individual that is playing for the Warriors team, because they know they have a trap laid for the team Titans who are playing the batting phase of the second half of the game of cricket for PCL 2023. Ooh. And there's a appeal for out, but umpire still not interested. I bet Sarfaraz knew that the ball did not touch his bat, so he stayed at the crease. But we can see good bowling from Ashraf. Other than the wide that he had provided, not a single run has been given by him. Oh, nice bowling, touching the legs of Sarfaraz, trying to shake him with the bowling prowess that is Syed Ashraf's. So he has laid out a good and intensive trap to trap Sarfaraz in his web. And a shot played, the ball is in the air for a long period of time and fielder is underneath. And the ball catches it with one hand. Each person of the Warriors camp is going crazy at the moment. And sorry for the cough, but that catch was impeccable. So that's the third wicket that has been taken. Syed Ashraf, very impeccable bowling. There's no other word that can be provided. 2 wickets taken in by him in this over. Other than a wide, no runs has been leaked from him. That's what a bowling attack Titan faces
at the moment. Beautiful bowling from Syed Ashraf. As a result, you can see Warriors are in full attack mode. Each player has full on accepted that their team is performing well, and now they are playing 100% after that wicket and the catch taken by the individual with a single hand. Nasser Ahmed has now come into the field, and hopefully he is the ray of hope that Warriors Titans team is looking for. Syed Ashraf still not done, and a beautiful over being played by him. A wide only being provided to him with 2 wickets in this particular format of the second session. 6 for 3 is the runs that has been scored and the wickets taken. Say Ashraf has been very successful. 1 run, 2 wickets in the 1 over. Very economical in his first over that is played for Team Titans. So that's a over up for Syed Ashraf. Next is over is back to Mr. Manjir, who has been awarded the ball on the confidence from the first wicket that he had taken. Only 5 runs that has been given by him. Kishore will be the one facing the bowler. He's one. Ooh, very good bowling. And you can see the intensity with what each and individual of Warriors are playing with. The 100% confidence of the bowlers. And we can see that the fielders getting inspired by the balls uh, that they are attacking with two Team Titans. There's no one can stop them at the moment. That was a nice ball played by Manoj. Completely shakes the batsman. Batsman not confidence on the shot on what to play. And Manoj shaking the foundations on the particular batsman that is attacking at. Titans still at 6 runs, 3 wickets down. Manoj Panjir is on the prowl. Whose wicket or what will be the outcome of the next ball? And that was a good ball from him. That scores for a dot. This is the bowling length and line that Manoj has to consistently play with so that he can try to create obstacles for Team Titans who are actually facing it at high pressure right now. See, fielders are also being well aware of the ball. And Manoj plays it and it goes for the first 6. For Team Warriors, we had to wait for a 6 after a large moment. And so that come to field. But the first 6 has come early right now from Kishore Kumar's bat. In just the over 2.4. 12 runs and 3 wickets down. Manoj has to rethink his strategy and play with the mindset and try to return to his bowling length so that he does not give any room for the batsman to play such shots afterwards. So there has been even a fielding change to try to hinder this impact. Ball still in the air and the ball goes for a boundary, runs towards it and it reaches it. So 10 runs in the form of boundary, 1 6 and 1 4, 3 dots. One more ball is still left. Nice impact created from Kishore's bat. Kishore striking at a very good strike rate. He has scored, is striking at a rate of 200, which is the highest
in this point of game from any individual who has played right now. And Kishore looking good. He's on the prowl for more runs. That was a good ball faced by him. It completely stumps him, but not in the stumping format. Still has his wicket intact. तो देख सकते हैं थोड़े चौंक गए किशोर. वो लास्ट बॉल पे 10 रन्स उन्होंने अपने खाते में डाला बाउंड्री के रूप में. तो कोशिश होगी कि टाइटंस ये अपना फायदा जो किशोर ने उनके लिए लाया हुआ है वो बरकरार रखे, क्योंकि अगर बरकरार नहीं रखेंगे तो वो फंस सकते हैं वॉरियर्स के जाल में इस मुकाम तक. तो 16 फॉर 3 ओवर्स खत्म होते हुए चौथा ओवर स्टार्ट करने के लिए सैयद अशरफ है बैक. तो अशरफ को लाया गया क्योंकि उन्होंने 2 विकेट और एक ही वाइड अपने पिछले ओवर में लाया था अपने बॉलिंग के रूप से. तो वॉरियर्स चाहते होंगे कि अगर कोई होंगे विकेट चटकाने के लिए तो सैयद अशरफ नाम पे हो. तो वो पहला बॉल खेलने की कोशिश नासिर अहमद ने, पर कुछ फायदा हुआ नहीं. वो शॉट खेल करके पहला बॉल डॉट हुआ. तो सैयद अशरफ अपना जाल बिछाने लग चुके हैं और कोशिश करेंगे कि वो इधर नासिर या किशोर जो अभी फॉर्म में है उनका विकेट ले सके. कोई भी सा विकेट लेंगे तो बहुत फायदा टीम वॉरियर्स को होगा. थोड़ा सा एक रुकावट पैदा हो जाएगा वॉरियर्स टाइटंस के लिए. और अच्छा सा शॉट खेल चुके हैं नासिर. रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और बाउंड्री जाते हुए एक बाउंड्री दे चुके. तो ये पहला 4 नासिर के बैट से. थोड़ा इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स अपने टीममेट से लिया होगा, पर अच्छा सा शॉट अटैकिंग की जिसकी वजह से वो बाउंड्री के रेखा क्रॉस करते हुए उनको बाउंड्री मिल चुकी. टीम शॉट खेलते हुए पर एक अपील थी आउट की, पर इंटरेस्ट एम्पायर नहीं है. तो अच्छी बॉलिंग सैयद अशरफ ने थोड़ा चेंज करने की कोशिश. नासिर को थोड़ा अपने विकेट गंवाने के मौका देना नहीं पड़ेगा. ऐसा शॉट्स दोबारा नहीं खेलने का जिससे कि टाइटंस अपना खेल सके. और ये एयर में जाती हुई बॉल, ये है पहला छक्का नासिर अहमद के लिए. नासिर भी थोड़ा इंस्पिरेशन, दोनों टीम मेंबर्स अपने टाइटंस को थोड़ा जीत हासिल करने के लिए वो फॉर्म आ गए हैं. इसमें भी अगर देख सके तो 10 रन बाउंड्री में ऑलरेडी लग चुका है. सैयद अशरफ को अपना बॉलिंग का कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने का है. और स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए उन्होंने चौका दिया बैट्समैन को. नासिर वो खेल नहीं पाए बॉल को. तो अच्छा सा दिमाग मिस्टर अशरफ ने लेके आया अपने बॉलिंग अटैक पर. वो ये कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा अगर विकेट चटकाने का है, विकेट लेने का है. अभी सही मौका होगा ये स्ट्रैटेजी अपना करके. अच्छा सा शॉट खेला, बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुई. कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और ये हुआ दूसरा 4 इस ओवर के अंदर. द बॉल एयर में है और दूसरी 6 के ले गया. 4 थोड़ा सा यहाँ पर चेकिंग बाउंड्री की. वो 4 के अंदर जाते हुए देख करके अच्छा सा स्ट्राइकिंग किया टाइटंस ने. इस ओवर का फायदा
डिफिकल्ट हो रहा है ना, क्योंकि मुझे 4 बॉल का दिखाई दे रहा है, बाकी 2 बॉल का दिखाई दे रहा है। इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते या थोड़ा छोटा कर सकते हैं? ओके, वापस माइक कर सकते हैं वापस। तो अभी 35 फॉर 3 है, 114 चाहिए 16 ओवर में। स्ट्राइक रेट, रन रेट 7.12 का, स्ट्राइक रेट 8.75, वेल ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट है। 35 फॉर 3 टाइटंस का अभी चल रहा है। तो अभी मिस्टर सनी राजू अपना पहला ओवर खेलेंगे against Team Titans. So we'll be seeing the action of Mr. Srini Raju, and he has put some important players in the particular field according to his requirement to gather those wickets that is needed early on, because these two batsmen are looking dangerous. They are striking very high at the moment. So Kishore is playing at 10 for 6 and Nasir is playing 18 for 7. So almost both of them are almost reaching 200 strike rate. So their wicket is needed right now. So a good bowling from the first ball from the hands of Mr. Srini Raju. First ball goes for dot. But Nasir and Kishore have to learn and adapt to the bowling that is being attacked to them. And a good batting shot that is playing, no fielder present, the fielder trying to stop the ball, and he succeeds in doing so. And ooh, the fielder was successful in stopping the ball, but that running was impeccable and very fast. Nasir even tumbled while trying to return to the crease, but nonetheless, he was successful in taking 3 runs from that particular ball. So they would be happy. Just confirming whether it would be 1 run shot or it's all 3. Yes. One run shot. So it's even though it's just 3 runs, they are only taking 2 runs at the moment. That on the line. It should be 5 runs. As per the So just 2 runs, even though running was impressive, but impact was nonetheless for just 2 runs. So Titans got doubtful from that particular ball. Hopefully they regained their confidence. And nice bowling from Mr. Sriniraju, only a single from them. Three runs only in these 3 balls, a double and a single in the last 2 balls respectively. The first ball was a dot. So we can see Mr. Sriniraj is trying to be economical and try to place the fielders at the right spot so that no runs can be leaked from the bowling attack that he has been given. Knows these two players how their style is when he's trying to attack them. So hopefully Titans can overcome this obstacle that has been facing them right now. So a single from that rotation. So 4 runs in this over in 4 balls. So rotation would be one key that Titans would be looking forward to, trying to confuse the bowler so that he has to change his length and style as per the batsman. And that was a shot. It's going to the fielder and it reaches the boundary for a 6. Beautiful shot. That ball was bludgeoned from the bat of
Nasir. Nasir, being destructive with his strength as always, tries to take the ball over the boundary for 6. So 10 runs in this over, they would be very happy. So the 3 runs that they were not awarded, just a 2, would not make them that miserable after that particular shot from Nasir. Nasir tries to sweep the shot, but it goes for a wide. So runs still coming in the form from Warriors. They have to create some strategic moves that can create an obstacle, try to hinder the runs that Titans are playing with right now. So that is a wide and a 4. So now more runs are getting leaked in these overs. So Titans are well above the required run rate. They know that they have to capitalize right now. 51. And with this, Mr. Swainraj over ends a bit expensive. 16 runs given in the first over itself from his bowling. So Team Titan even reaches the half century, 51 for 3. So now the required run rate has dropped from the triple digit to double digits. 98 required from 15 overs at a required run rate of 6.53. And Titans are flying high with an ace run rate of 10.2. Nasir batting at 250 strike rate, 25 runs, 10 balls, and Kishore 13 runs, 9 balls. So above 100 strike rate almost. Above 100 strike rate, and so both will be the new bowler that the Titans will be facing against. So good batting from the team of Titans. They had lost early wickets, 3 to be precise, but Kishore and Nasir with their partnership have tried to create a beautiful impact from their attacking, and this is troubling for Team Warriors. So they have sent a new bowler in the form of Subodh. Kishore strikes the bat well. You can hear that impact of the ball. Nasir tries to run for a 2, but the ball returns to the hands of the fielder. Single taken. Mr. Isaki Raja was the fielder who stopped that single. Who stopped the ball running towards the boundary. Only a single taken. So now Subodh with the second ball, there has been some field changes from Somesh. He's finding that right now is the time to take this wicket unless it turns to a dangerous game of cricket where they will have to leak more runs. So the change of field done by Somesh, and now Subodh with second. Nasser strikes the ball, but a fielder present in close vicinity to where he's batting. In just a dot. Nasser's impact has been great, well above 200 strike rate. He strikes the ball very well. Isaki Raja running towards the field to stop that ball reaching the boundary. Runs in capable of doing so, and he does it. But Nasser comes back with a 2. Taken fast running between the wickets. And fast running by Isaki Raja to stop the ball. So 54 for 3 is the current score. 3 wickets down in 5.3 overs. So Subodh now has to come up with some new solutions.
but the new solution's not looking forward. And it's a six. It's a beautiful six. Nasser hammering that ball towards the boundary for a six. And in doing so, he puts Titans to 60 for three in just 5.4 overs. So, sixth over about to finish in two balls. Nasser has put his team on top. Ooh, no. You could hear there was some sound, but that was maybe from the bat which struck the ground. But a single taken. There's a beautiful rotation played by Nasser and Kishore. They know how to strike and rotate so that they don't fall the trap how Warriors had. So the last ball goes for a dot. The over ends. And now 61 for 3 after 6 overs. 88 runs required from 14 balls. 6.29 is the current run rate. And net run rate required. But flying high is Titans team with the run rate of 10.17. Kishore 14 for 11 and Nasser 34 of 14. So you can see Nasser is already about 200. He asked how much is his strike rate. After calculations and some calculations, strike rate is 242 and Kishore's strike rate is 127. Both the players have understood what is being awarded to them and how to play smartly. And with a good strike rate, we are hammering in this particular phase of cricket. Warriors looking troubled at the moment. They need some wickets. Nasser or Kishore, both are having a good partnership right now. Any wicket taken will be much more in their favor. And coming for that is Mr. Srini Raju. So after giving 16 runs in that particular first over that he had bowled, he's now back with a vengeance. He needs to take some runs down or take a wicket. And he starts that with a dot ball. तो दूसरा बॉल कोशिश करते हुए फास्ट रनिंग किशोर ने की क्रीज में वापस आ गए आसानी से एक रन प्राप्त की अपनी टीम के लिए को पता है कि मिस्टर सिंह राजू थोड़ा टाइट बॉलिंग करते हैं तो थोड़ा रोटेशन करके या थोड़ा अटैकिंग करके अपना साझेदारी को रख करके टाइटंस को अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा शॉट खेलने की कोशिश पर नहीं खेल पाए सही से तो थोड़ा सा वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट की थोड़ा सा सही खेले विकेट ना गवाए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां पर उनकी साझेदारी बिल्कुल ट्रबल कर रही है वॉरियर्स की टीम को लंबे समय तक रहेंगे तो वॉरियर्स के लिए मुश्किल पड़ सकता है आगे बढ़ने के लिए स्वीप खेलते हुए ये बॉल बाउंड्री की तरफ कोई भी उनके रूफ के बाहर रेखा क्रॉस करती हुई ये है 4 रन्स तो 4 रन्स जाती हुई किशोर के बैट से अच्छा सा स्वीप शॉट खेलने की कोशिश तो 0 रन्स तो 0 रन्स ये लेग बाय था लेग बाय रन्स नॉट अवॉर्डेड तो दोनों अभी डॉट बॉल ही कैलकुलेट है
तो स्कोर 62 for 3 जा रहा है। अच्छे से रूप में टाइटंस खेल रहे हैं और विकेट चटकाना पड़ेगा कोई भी महत्वपूर्ण जो बैट्समैन अभी इस मुकाम पर वो टाइटंस के लिए है। तो वाइड अभी प्राप्त की टाइटंस टीम ने अपनी टीम के लिए। तो सिर्फ 2 रन इस ओवर में प्राप्त किया है किशोर और नासिर जो खेल रहे टाइटंस के लिए। और कोई बात नहीं, तो स्ट्राइक रेट फिर रन रेट फिर भी ऊपर है। तो ओवर की समाप्ति 2 रन देते हुए स्कोर है 63 for 3। 16 रन जो पहले मिस्टर श्रीराजू ने गंवाए थे पहले ओवर में, वो थोड़ा कम कर चुके, सिर्फ 2 रन ही दे चुके इस टीम के। तो 18 रन्स दिया, कोई विकेट ना नुकसान करते हुए टाइटंस बढ़ती है 63 for 3 7 ओवर्स के बाद। रन रेट अभी 9 के ऊपर चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 6.62 है। तो 86 रन चाहिए 13 ओवर्स में अगर टीम वॉरियर्स को ये मैच जीतने का है तो। So the amount of runs that is required is still there, but we should just also learn from the summary that 3 wickets are down for Team Titans, and if they want to come back from this, they need to have wickets kept in their bank. Understand that these 2 players are important for the game right now and let them play, and they need to face the ball with smart decisions of shot selection so that they don't lose the wickets that has been given to them. The opportunity has to be taken to ensure that they don't lose any wickets early on. Don't make the same mistakes as Team Warriors had done in the first half of the game. So now Nasir will be facing the new bowler Tark Muthu Jataga. Nasir will be the one facing his attack. The first over ball by Tarak, and with that the ball races towards the boundary. A double being taken, and it's a 4. Well batted by Nasir. He knows what power and strength that he has, and he has converted that ball into a 4. So Nasir now goes up to 39 of just 17 balls. And supporting him as his partner in crime, 14 for 15, Kishore. Ball is in the air, fielder tries it, fielder tries to hit the bails of the wicket, but unfortunately it does not light up, so the wicket is still intact. Good running between the wickets from both the team members. So 5 runs in 2 balls from Tarak Bodhu's bowling. So 93.3 is the strike rate. Kishore, who will be facing Tarak Bodhu. Who again, the same shot that he tried to play earlier, but no impact created from his batting style. He knows he needs to rotate the strike as Nasir is looking dangerous and well situated. Is the sweep shot, but a fielder present next to his vicinity stops his ball from rolling towards the boundary, and that leads to the third ball being over. 7.3, 7.4, sorry, 68 for 3 is the score. Very good bowling in it. Kishore is facing very tough balls from the team
Warriors, but they can take their time and play accordingly with proper shot selection. Only thing is they don't have to lose any wickets right now. Wickets are important to this game. Just try to rotate the strike to his batsman and capable of doing so. One run stop from the batsman using football tricks, but not able to stop 2 runs. So Kishore captures 2 runs with his fast running along with his teammate. And with that, the over ends with 8 overs finished, 70 runs being 70 runs being scored by team Titans against team Warriors. So 79 runs required in 12 overs with a required run rate of 6.58, and Titans are well above their belt with the strike rate of 8.75, so they can just chill and try to score runs without having much stress, and that's what the batsmen are doing at the field. So now at the top pace who are present are team Titans with their batting, even though with the loss of 3 members early on, they have kept their wickets intact and tried to help their team reach such a total that is very commendable from their end. 73 for 3 का स्कोर कार्ड का गति चल रहा है. टाइटंस पहले हाफ में ही अच्छा सा रन्स अपने अकाउंट में डाल चुके हैं. इसकी वजह से जो प्रेशर बैट्समैन को अभी लग रहा है वो इतना नहीं है क्योंकि वो अभी वेल अबव द रिक्वायर्ड रन रेट खेल रहे हैं. तो अभी नासिर अहमद जो अभी भी डेंजरस इस फॉर्मेट के गेम पे है, फेस करेंगे मनोज को. मनोज ने एक विकेट चटकाया था 15 रन देकर के 2 ओवर जो उन्होंने बॉलिंग किया है. तो वॉरियर्स को उम्मीद होगी स्पेशली सोमेश को कि वो अभी भी अपने बॉलिंग से कोई अगला विकेट चटकाए जिससे कि थोड़ा कामयाबी और थोड़ा रन की गति कम हो जाए, वॉरियर्स को मदद मिल जाए इस दौरान. वो जाते हुए बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई ये होता है 4 रन. तेज गति से बॉल फेंका पर इवन स्लाइड टच करके बॉल जल्दी जल्दी जा करके नासिर ने 4 रन अपनी टीम के लिए प्राप्त किए. ये वाइड भी था तो 5 रन. अब फिर से बॉल फेंका जाएगा. तो अभी भी टॉप पर टीम टाइटंस इस दौरान. तो वाइड की वजह से 5 उनको मिल चुकी है. वो अच्छा शॉट सिलेक्शन खेलते हो वो कोशिश करें. किशोर कुमार 1 रन लेने की कोशिश में, पर लकीली वो जल्दी वापस क्रीज की तरफ जा चुके. ये थोड़ा सा अवेयरनेस देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सब फील्डर मौजूद है जिससे कि वो अर्ली ऑन अपना विकेट ना गवाए जब वो अब मैदान में खेल रहे. कि नासिर उनके सपोर्ट से ही खेल रहे हैं दौरान. तो एक रेखा की तरह फील्डर ऑलरेडी मौजूद, बॉल को रोकने के काबिल, और ये होते हुए यहाँ पर सिंगल रन लिया गया है टीम टाइटंस ने. तो 6 रन इस दौरान प्राप्त किया है टीम टाइटंस ने इस ओवर के द्वारा. जो मनोज है अपनी तेज गति बॉलिंग के साथ देखते हुए किशोर को फेस कर रहे. किशोर ने जल्दी से 1 रन लिया. स्मार्ट रनिंग और स्मार्ट अवेयरनेस अभी दिख रहा है किशोर के दौरान. उन्होंने पता था कि वो क्रीज की तरफ जल्दी से पहुंच सकते हैं
और नासिर तो ऑलरेडी रेडी थे रोटेट करने के लिए स्ट्राइक, तो अच्छा डिसीजन इस दौरान दोनों मेंबर्स ने लिया अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्कोर कार्ड अभी रीड करता है 77 फॉर 3। फास्ट बॉलिंग का मनोज जो भी फेंकने वाले हैं वॉरियर्स की तरफ से, और नासिर अपने बैटिंग स्ट्रेंथ से कोशिश करने की काबिलियत रखने के लिए बस एक रन हासिल कर सके इस दौरान। 5 बॉल की गिनती हो चुकी है, अभी एक बॉल बाकी, और अच्छी बॉलिंग इस दौरान खिलाया नासिर को, जो किशोर को खेल नहीं पाए, और इस ओवर के समाप्त खत्म होते हुए 78 फॉर 3 का स्कोर हो चुका है 9 ओवर के बाद। सो राइट नाउ flying high are the aces of Titans, and the aces are Kishore and Nasir, who have a brilliant partnership that they have set up between both of them themselves, ensuring that their team is at the top of the second half. After the fall of 3 wickets, it was seemingly assumed that they'll be losing wickets, but this is not the case right now. This has been ensured by Team Titans. That 78 for 3 in 9 overs is a good score. And the wicket goes the important batsman that was troubling team Warriors at the moment has now departed to the pavilion. A beautiful innings played by him. 22 runs in just 22 balls, 23 with this ball that he has faced. So almost above a strike rate of 200 almost. So that was beautiful innings that was played by both the batsmen. Kishore is still there in the crease, but losing his partner from that bowling of the new ball from Tarak Modu. So now new batsman is at the crease. Muttu, one of the dangerous batsmen, is known for hitting and attacking, will be now facing the bowler Tarak Modu. So let's see what ray of hope can he bring to Team Titans camp with his arrival and departure of Nasser. How can he bring some fortune to his camp to ensure that this game is in the bag? So just having some awareness and the field set being changed to adjust as per to the new batsman. Muthu now faces Tarak Murdu's second ball. So first ball as a defense. There are some cheers because Muthu is a striking batsman known for hitting the ball outside the boundary. So, well aware of the situation, Team Warriors are adjusting to his particular play set to ensure that they stop it. In good fielding from Sumesh, tried to stop the ball that was struck from Muthu's bat, ensuring that no more runs are leaked in favor of Muthu, who is at the striking end. Tarak Muthu with his next ball inspiring confidence with that defensive shot being played by Muthu. He has a trap laid out for him. He just has to wait for Muthu to fall in it. And the shot, that's what we are aware of. That goes for a sweet six. First six of Muthu. Is it the only six that will be playing, or will there be a hail of sixes from the batsman who is very dangerously known for striking? So देखना पड़ेगा क्या मुत्तू अभी करेंगे इस नए बॉल का।
ये अच्छा सा रिस्पॉन्स और कमबैक ये मिस्टर तरक मुंडू का था वो 6 के बाद। और इस ओवर के बाद ये समाप्त। 84 फॉर 4 का अभी स्कोर कार्ड है। टाइटंस के फेवर में अभी भी चल रहा है। उन्होंने एक विकेट गंवाया पर अभी मुत्तू टीम के क्रीज में आ चुके हैं जो स्ट्राइकिंग बैट्समैन है। तो कोशिश होगी कि इसमें से उनकी विकेट थोड़ा जल्दी से जल्दी लेने की हासिलियत किया जाए जिसकी वजह से जो फेवर होगा वो उनके कैंप में चला जाए इस दौरान। तो देखेंगे कि यहाँ पर मनोज पंजियर ने 23 रन दिया एक विकेट लेकर के 3 ओवर डाल करके। सैयद अशरफ ने 2 विकेट दिया 20 रन दिया। और मिस्टर श्रीनी राजू ने 2 ओवर में 18 रन दे करके 9 विकेट। मिस्टर सुबोध कुमार 1 ओवर में 10 रन दे करके 9 विकेट। और लास्ट में तरक मुर्दू ने 2 ओवर खेल करके 13 रन दिए टीम वॉरियर्स को 1 विकेट ले करके। तो यहाँ पर सबसे इकोनॉमिकल बॉलर अभी भी तरक मुर्दू है जो लास्ट ओवर खेल चुके हैं। और यही कोशिश रहेगी वॉरियर्स की कि कोई ना कोई डेंजरस बैट्समैन यानी कि मुत्तू का विकेट ले कि वो अपना गेम अपने अकाउंट में डाल सके। जो पहला मैच खेल रहे हैं हम लोग। 65 चाहिए 10 ओवर में। स्ट्राइक रन रेट नेट रन रेट उसके ऊपर ही चल रहा है 84 का। अभी भी टाइटंस टीम इतने हिले हुए नहीं है 4 विकेट गवा करके। तो ड्रिंक्स के बाद देखा जाएगा क्या होगी अगली स्थिति। तो अशरफ है नए बॉलर जो अभी वॉरियर्स के लिए बॉल अटैकिंग करेंगे। और किशोर कुमार उनको फेस करेंगे इस बॉल पहला बॉल। देखा जाएगा कि क्या अशरफ जो 2 विकेट ले चुके हैं तीसरा विकेट अपने बैंक में डालेंगे। और ये किशोर कुमार ने अच्छा सा बॉलिंग अटैक किया तो वहां पर फील्डर मौजूद जो सुंदर थे वापस बॉल विकेट कीपर के हाथों पर। और सिर्फ एक ही रन देने के खिलाफ टाइटंस को कोशिश करना पड़ेगा कि ये रन की गति ना रोके। और वॉरियर्स को कोशिश करना पड़ेगा कि ये गति को कम से कम जल्दी से जल्दी किसी हालत में रोका जा सके। So that is the point. Each team has its own goals. Titans would be wanting to finish the match to keep a good run rate, and Warriors would be to hinder the match by taking maximum amount of wickets, especially the person who is facing them right now. Good ball from Syed Ashraf, who is known to take 2 wickets in his bowling attack. He has just given a flurry of 21 runs, and you would hope to take this important man wicket who is hammering the ball. So, sensing that it would not create a good impact,
batsman left the ball, which has gone for a wide. So taking Titans to closer to their goal of 149, the needed run. Good bowling, a very good comeback and a response from Syed Ashraf. 86 for 4 is the score. 3 balls over in Mr. Ashraf's third over that he's bowling. Ooh. Ashraf, unfazed by his bowling attack, trying to play good lengths and bowling attack to Matu, who is looking phased at the moment, unable to comprehend the attack. Same thing, Muthu not looking comfortable in the zone, and Ashraf is bowling at danger zone, ensuring that runs are impeded by every obstacle that he's trying to attack with. So just a slight edge of the ball, just a single taken from Muthu. So scoreboard runs goes to 87 for 4. Sure, Kishore and Muthu are the current batsmen and the key for Team Titans. Sure, 18 for 22 and Muthu 7 for 10. The loss of 4 wickets, Nasir, Sarfaraz, Ramkumar and Sadiq, of which Nasir has played good innings, 42, and other people have just a single digit scores. So now Tarak Modu back on the attack, 13 runs in 2 overs with 1 wicket taken. So he would try to, with that confidence, try to attack with maximum potential as he can, and that he has done with the first ball. So good response from Tarak Modu on that first ball, started with a dot. We want to ensure that he does not leak runs. And with his bowling attack, he has ensured that he has shaken Muthu with his new ball. And a good attack. Ball runs towards the boundary. Does the ball stop? So 2 runs from that particular ball. The fielder was capable of stopping that. So good shot being played from Muthu and it goes towards the boundary. 4 runs for the team. So the score goes to 93. As I mentioned, Muthu Kumar is a very dangerous batsman. They have to take early wickets if they have some. They need to keep the competition well within their reach. 56 is the required runs in just 8.2 overs. Oh, that's a shot. It's going up in the air. Bowler trying to take the catch, but it's a 6. It's a 6. Both the fielder who were present at the end of the boundary line unable to take the catch, and the ball still goes for a 6. So 99 for 4 is the new score. Just one shot from a century of runs from the team. Ooh, and the ball goes up in the air, touches the boundary, and it goes for a 4.
And with this, Team Titans score above 100, and the score is above 100. 103 for 4. Muthu is striking the ball well with his strength that he is well known of, as I mentioned earlier, as well in the game. He's one hell of a batsman, knows how to hit bludgeoning shots, hammer the ball wherever he pleases to, and that's what he has done in the last over, taking his team total to 103. Only 46 runs required in just 8 overs. So almost less than run a ball. So the game is well within their reach if they just try to keep the wickets and play with the mentality that they have been playing with right now. So Kishore will be the batsman that will be facing. Mr. Srinarajo is back on the attack. Like to try to take the wickets of the batsman that is being faced with him currently. Kishore is the batsman that will face Mr. Srinaraju. Good shot taken from him and a quick single from both the members. So good rotation, and he knows that Muthu is very dangerous if he plays his shots well. So he has gambled and trying to take his chance with Muthu, who is looking strong. With that, Mr. Raju tries to create an obstacle with his new attack. Unfortunately, ball does not go planned. Muthu is unable to strike the ball well with his bat. Ball goes for a dot. 4 more balls left. See what is the impact that Mr. Srinaraju can create with this bowling attack. Not a beautiful strike from Muthu, and the fielder present returns the ball back to the fielder. So Manoj Panjar was the bowler, ensuring that runs were well within the reach. So 2 runs provided. Wide ball. So 1 more run accounted into his account. और इस गति से जाते हुए रन 106 का स्कोर बोर्ड में चल चुका है टाइटंस का. वो बहुत सामने है अपना गेम अपने बैग में लाने के. एक और वाइड दिया मिस्टर श्रीनिराजू ने, और इससे रन्स की गति टाइटंस को फेवर करती हुई 107 पर जा रही है. तो अभी भी रन पर बॉल से कम 42 रन्स चाहिए 45 बॉल्स में. और ये स्ट्राइक बॉल करते हुए बाउंड्री की रेखा क्रॉस करते हुए ये होता है 6. सुपर शॉट फ्रॉम द सुपर बैट्समैन. और ये सुपर बैट्समैन मिस्टर किशोर है, जो ये 6 अपने टीम के लिए हासिल की. तो 25 ऑफ 24 बॉल्स 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट टू 24 रन इन 18 बॉल्स. दोनों का स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर. इसका मतलब 2 balls. तो 2 बॉल बाकी.
और एक और ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है मिस्टर श्रीनिवास जो अपने yes. ओवर के दौरान 29 रन्स ले चुके हैं अपने ओवर जो उन्होंने खेला हुआ है वॉरियर्स के लिए। तो आखिरी बॉल अच्छा सा कमबैक था तो डॉट के ले गया बॉल। 114 फॉर 4 टाइटंस। जीत के बहुत सामने अगर देखा जाए तो लास्ट बॉल भी अच्छा सा कमबैक। हंड्रेड 14 फॉर 4 का स्कोर है। रिकॉर्ड रन रेट सिर्फ 5 है, 7 ओवर बाकी और नेट रन रेट 8.77 के गति पे जा रहा है। तो टाइटंस बहुत अपनी जीत के सामने बढ़ते हुए बैटिंग कर रही है और वॉरियर्स को चाह करके 6 विकेट हासिल करने का है जिससे कि वो अपना गेम हासिल कर सके। तो नया बॉलर जो आ रहा है वो है इसके राजा जो वॉरियर्स के लिए बॉलिंग करेगा और फेस करेंगे अमित इजाकी रक्षा के बॉलिंग को मित्तू कुमार। फील्डिंग थोड़ा बाउंड्री की तरफ थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है कि बाउंड्री के रेखा के बाहर डालने में माहिर अपने मुत्तू कुमार वॉरियर्स की टीम से। पहला बॉल अच्छा सा रिस्पांस मिला नए बॉलर इसाकी राजा से। तो कोशिश वही रहेगी कि ज़्यादा बॉल्स ना दे, थोड़ा बॉल्स वेस्ट कर रखे, रन रेट को कम लेते जा जिससे कि उस समय के दौरान वो अपना विकेट हासिल कर सके जो अभी 6 बाकी है। पर मुत्तू वो नहीं करने देंगे, मुत्तू तो बाउंड्री के बाहर ही बॉल फेंकेंगे। तो वो 4 के और जाते हुए स्कोर बढ़ता है 118 फॉर 4। जैसे बताया था मुत्तू बहुत माहिर है सिर्फ बाउंड्री में अपना गेम या गेंद मारते हैं अपने बल्ले से। तो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैच ख़त्म करें, रन रेट जो होगा टीम का वो बढ़ता जाए जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होए आगे जाके खेलते हुए। तो सुमेश थोड़ा सा बात कर रहे हैं अपने बॉलर के साथ। और अच्छा सा शॉट खेलते हुए मुत्तू का बॉल बाउंड्री की रेखा की तरफ और ये एक और 4 की बारिश स्टार्ट करते हुए मुत्तू ने अपना खाता खोला है 32 रन्स बना करके 21 बॉल्स में और उनकी साझेदारी में अपना सपोर्ट देते हुए किशोर कुमार। तो 27 रन चाहिए, 122 का स्कोर कार्ड है। और ये अच्छा सा स्ट्राइक करते हुए ये हुआ हैट्रिक ऑफ फोर्स, 12 रन 3 गेंदों में। तो यही बल्लेबाजी टाइटंस को चाहिए थी और मुत्तू ने वही बल्लेबाजी अपने बैटिंग के दौरान अपनी टीम को अपने फायदे प्राप्त किया और तेजी से रन्स बढ़ते हुए 126 फॉर 4 अभी स्कोर कार्ड बता रहा है। और एक और स्ट्राइक करते हुए बाउंड्री की तरफ जाते हुए पर वहां पर फील्डर मौजूद जिन्होंने
ये बॉल रेखा को छूते हुए रोका और सिर्फ एक रन इस दौरान आखिरी बॉल जो खेला हुआ था दिया टाइटंस टीम को। सुमेश अपना टीम एडजस्ट करते हुए, क्योंकि अभी किशोर अभी आ चुके हैं रोटेशन के द्वारा, उनको रन्स अभी और देने का नहीं है, तो विकेट्स लेने का ही सहयोग करे इस दौरान। स्वीप शॉट खेलते हुए चौक गए मिस्टर किशोर, पर फिर भी अच्छा सा साझेदारी और बैटिंग दोनों टीम मेंबरों ने खेल करके अपनी टीम को 127 फॉर 4 अपने टीम को दिलवाया, जो बहुत अभी क्लोज है अभी मुकाम तक, जिससे कि वो जीत सके। तो सिर्फ 22 रन चाहिए 6 ओवर्स के अंदर। रिक्वायर्ड रन रेट 3.67 और अपना आखिरी ओवर खेलने के लिए आ चुके हैं सैयद अशरफ। तो सैयद अशरफ अभी नेक्स्ट बॉलर रहेंगे वॉरियर्स के लिए जो खेलेंगे अभी। अशरफ ने पहले ओवर में 2 विकेट तो चटकाए, पर उसके बाद कुछ उसके विकेट हासिल नहीं की, पर कोशिश रहेगी कि वो थोड़ा कम रन्स देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाए, क्योंकि यही फॉर्मूला है कि विकेट्स अगर चटकाएंगे तो वो गेम अपने आप जीत सकते हैं। तो अभी मुझको जो बैट्समैन है वो अभी फेस करेंगे सैयद अशरफ के बॉलिंग को, तो देखा जाएगा कि क्या टाइटंस इस दौरान भी बारिश करेगी रन्स की, या अशरफ उसको रोक सकते हैं अपने अम्ब्रेला से। तो पहला ओवर में ही पहला चौका, पहला ओवर पहला बॉल का पहला चौका, और उससे जाता है स्कोर बोर्ड का रन 131 फॉर 4। पहला बाउंड्री इस ओवर का, अभी सिर्फ 18 रन बाकी। और ये डिफेंसिव शॉट मत्तू कुमार इस कोशिश में कि जल्दी से मैच खत्म करने के, जब शॉट मिलेगा तब वो शॉट खेलेंगे जिससे कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाए, वो अपने टीम को जीत के और सामने ला सके। और थोड़ा सा स्लाइट एज के बॉल खेला, दो डॉट बॉल्स। और ये एक पावरफुल इम्पैक्ट वाला बॉल जो स्टेडियम के बाहर जा चुका। ये है दूसरा, दूसरा बाउंड्री के बाहर वाला 6। तो 137 जाते हुए सिर्फ 12 रन अभी बाकी है गेम को जीतने के लिए। थोड़ा वॉरियर्स गुमसुम, वेरी क्लोज कॉल था, मुत्तू बच गया इस बॉल पे, या फिर विकेट अशरफ का होता अगर थोड़ा सा भी बॉल सामने बेल्स की तरफ होता, तो स्टंप की तरफ। सो एक ओवर बॉल बाकी। बॉल विकेट कीपर के हाथ पे, पर वो ग्राउंड पे था, पर फास्ट रनिंग करके अब भी इसे 11 रन बाकी। तो इससे होता है शोएब अशरफ का सबब अपने गेंदों का। हाँ, तो 11 रन बाकी। क्या है, टाइटंस इसी ओवर में अपना गेम समाप्त कर ये गेम जीत करके पहला मैच के दौरान हासिल कर सकते हैं अपना फायदा।
या क्या अभी भी वॉरियर्स के पास कोई ना कोई ऑप्शन है, कोई लक उनको साथ दे सके जिससे कि वो बाकी के विकेट चटका सके और गेम जीत सके। तो सुबोध वापस आएंगे खेलने के लिए। 10 रन दिए थे अपने पहले ओवर पे, एंड दैट इज व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड। The game is favoring more and more towards Titans, and the game is all under their backs. Just 11 runs needed, but will they finish in this over? And the first ball goes for a dot. Muthu unable to comprehend and hit as per the ball that is being faced with from Subodh, but his intention would be to cross the boundary with the next ball that he is faced with. So now the second ball starts from Subodh. With that, he strikes the ball. The ball goes for single to the fielder's hands. So only a single can be awarded to Team Titans. So Muthu jumps to 40, 49 in 31 balls, and Kishore was facing 25 in 27. Ball reaches the hands of the fielder who were closest to them, but couldn't take a single or rotate their strike. So it's a dot ball. 139. 139. So 10 runs required in the last 4.3 overs, that is 27 balls, well within the grasp of Titans. Good strike from Kishore, but no runs taken from their end. So there's some talk between both the batsmen, either to rotate the strike or hit the shots with proper shot selection. Let's see and watch. 2 balls left in this over of Subodh. Good bowling attack from Subodh, only just a single being given in the 5 balls that he has provided. So the last ball remaining. And with the last ball, just a single being given. Score reads 139 for 4, 10 runs still required. As I mentioned, Titans are well within the grasp. 10 runs. So you can see here Mr. Isaki Raja, 1 over that he has provided has been expensive with an economy of 13. Next is Tarak Mundur, 3 overs, 29 runs. So both Kuban is next with 2 overs, 11 runs. Mr. Srini Raju, 3 overs, 29. 4 overs, Shayad Ashraf, 34. And Panjir Manoj, 3 overs, 23. So now 4 wickets down. 6 more wickets remaining, but the 4 wickets well within the grasp. And the team matches well. So next bowler is Sim. And a good strike of the ball. Manoj tries to reach the ball but unable to do so, and they are closer now by 6 runs required. And with that, Muthu scores 50, 53 in just 32 balls. So well played innings from Muthu from the Titans camp. Oh, unable to hit that ball. So now 6 more runs required in 3.4 overs. Can Muthu finish it with a 6? That's what all are hoping for.
And the ball goes in the air. Two fielders are present. And with that, Muthu's over innings. And this is the fifth wicket down. Mitesh is the one who had taken that catch. The ball was in the air for a long period of time, but with good hands comes good wickets, and he has taken the wicket of Muthu Kumar. So Muthu Kumar returns back to the field playing 53 runs. And now a new batsman arrives at the field. So now Avinash has come to the crease to face the bowler. That is Mohammad Wasim. So let's see what happens next. So Mr. Avinash leaves that ball. Still six more runs remaining. Ooh, the ball goes towards the boundary for a four. Good shot selection from Avinash. And now two runs required in 3.1 overs. Can they finish it in this last ball? Can Avinash win the game for Team Titans? Let's wait and watch. One run taken. And with this, Team Titan wins the game. Avinash takes double. And Team Titans. So Team Titan wins the game. Thanks a lot, Abhi. And with this, Team Titan wins the game. Good innings playing from Muthu, and those last few balls faced by Avinash helps Time Titans win the game. So let's see the summary. So as we can see, Warriors had played 20 overs with the strike rate of 7, run rate of 7.4 with extra 17. Had provided total of 148 for 9. Sundar played good innings, 68 for 44, which was the highest from Team Warriors. Mr. Raju supporting him, 38 for 39. And Ahmed was the bowler who had taken 3 wickets for 8 runs, but Titans in response had provided Muthu Kumar 53 for 34 and Nasir Ahmed 42 for 23, and the highest wicket taker was Ashraf Syed. But with this, Team Titans win the match by 5 wickets. Thank you. Stay tuned for the next upcoming matches in this week. Thank you, everyone. Good night.